Good morning, good morning, good morning, everyone. I hope सब लोगों ने रिवीजन किया है. You have done the revision of the direct theory question which I had given 6 to 7. किया कि नहीं तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes. So everyone, when you come, let me show you again. अपन ने क्या क्या कर लिया है. So if you come to this one, everyone, the basic, which are the standards we have already completed. So if you see everyone, ISA 200 is done. We have understood the basic paper pattern. Then we have understood the basic term. ISA 200 overall objective of the auditor किया था अपन ने. Then ISA 210 also we had done. Yes or no? 210 भी हो गया था. In 210 we had done yes sir. And then we did in the basic class review engagement. Then we did reasonable assurance, limited assurance, बहुत कुछ किया था. Yes. Then everyone, as I mentioned, there are 200 series, 300 series, 400, 500, 600, 700. But these are very important to understand the audit procedure. Audit कैसे होता है बताया. But when coming to exam, as I mentioned, it's totally different to clear your exam. So we'll focus on that also. Here and there, we need a basic understanding and what is the content which is given in your syllabus. That is also important. Yes, sir. So if you see everyone, ये दो standard हो गए. As I mentioned, this ISA 220 will be doing later on. So today, everyone, we will be starting with ISA 230. So 240, 250, and this one we will be doing later on because that is, if I start with this topic, थोड़ा बहुत आपको confusion होगा कि समझ में नहीं आ रहा सर etc. Then from tomorrow's class as well, we will be starting with ISA 300, which is very very important for your exam. जो question आता है, let's say the question which comes in your exam is from the section B point of view, risk का question आता है 16 marks and a direct theory question which comes of 4 marks. So from these standards, a direct theory question, so 20 marks का coverage. So but from tomorrow we'll be starting with the main topic. Sir ये कब करेंगे? Either 240, 250, this one and the chapter number 2 etc. Slowly once we complete these ISAs, when we shift to the past papers, जब हम past paper start करेंगे to do etc. At that time we'll do a past paper and these small standards we'll do at that time. Yes sir. सबको clear है? So today we'll be starting with ISA 230 audit documentation. Here also, it's a basic standard which you have to understand from a documentation point of view and important for theory MCQ. Very rare की आता है एग्जाम में. ऐसे की आता है MCQs में here and there direct theory question. There are 2 to 3 direct theory question which you have to learn. जो आ सकता है एग्जाम में. ये सर. So can we start everyone? बताओ. Yes or no? और क्या बहुत लोग आए नहीं. Monday morning. That is the reason. So it's okay, everyone, if you're watching recording, the coming 4 class, if you'll not be attending, no issues. But the coming week, from tomorrow, we'll be starting with the important topic. So please try to attend the classes because it's very, very important. QK will be focusing from the section B point of view. Yes, sir. Now, everyone, coming to ISA 230 audit documentation. Sir, अभी इसका मीनिंग क्या होता है एक्सेट्रा एक्सवाइजेड. एवरीवन, जब भी आप कोई पेपर प्लान करते हो ईसीसी का दिन, लेट्स से अब आप लोगों ने भी कौन सा पेपर प्लान किया है कि सर हम एफआर देंगे या ऑडिट देंगे या पीएम देंगे, जो भी पेपर. व्हेन यू प्लानिंग टू गिव एनी पेपर एवरीवन, कैन आई से डू यू मेक अ टाइम टेबल और नॉट? आप टाइम टेबल बनाते हो, आपका पूरा शेड्यूल बनाते हो कि सर ये करना इन द कमिंग 10 days आई हैव टू डू, इन द कमिंग 1 month आई हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट आई हैव टू डू दिस थिंग. सो यू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग कि सर ये करना मेरे को. नाउ सेम वे एवरीवन, व्हेन कमिंग टू ऑडिट ऑल्सो, अगर ऑडिट करना कोई कंपनी का तो अपन को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा. And when you're planning everyone, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, you write down the timetable on a sheet of paper, yes or no? Then आज ओके सर ये टारगेट अचीव हुआ, you tick it, you tick that कि सर these are the target, this is the target which have completed. So same way here everyone, जब ऑडिट करना होता है तो when an auditor does the audit everyone, he will check a lot of things. वो क्या करेगा? बहुत सारा कुछ चीज है ना, चेक करेगा वो. अभी वो जो चेक करेगा ना, what he will do everyone, when he will check ना everyone, he will maintain this record everyone. जो भी उसने किया है, जब से ऑडिट स्टार्ट हुआ है, ऑडिट खत्म होगा, जो भी उसने किया है सब क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट करेगा, सब लिख के रखेगा कि मैंने ये किया था. एंड जब वो लिखेगा, इधर इट कुड बी रिटन ऑन अ शीट और इट कुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक्सेल में स्टोर करेगा कि ये किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिटर करेगा. क्यों?
that whatever he has done the work, उसने 3 महीने में जो ऑडिट किया क्या क्या किया पूरा उसको लिखेगा वो कि ओके ये किया तो उसके बाद में ये किया. ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिटन. इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, जब आप पेपर प्लान करते हो कि सर ये पेपर देना है, इन दैट केस ऑल्सो व्हाट डू यू डू एवरीवन, आप लोग क्या करते हो? यू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग. यू मेंटेन कि सर टुडे आई हैव डन दिस, आई हैव डन क्वेश्चन फ्रॉम कैप्टन बीबीपी एक्सेट्रा, सब लिख के रखते हो कि सर इतना होगा इतना होगा इतना होगा इतना होगा. व्हाई? वंस यू गिव योर एग्जाम यू गेट द कॉन्फिडेंस कि सर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग. एंड इफ समवन इज आस्किंग यू एज अ फैकल्टी, मैं आपको पूछूंगा कि ओके आप एग्जाम देके आए, किधर प्रैक्टिस किधर किया आप लोगों ने, तो यू विल शेयर मी योर एक्सेल फाइल कि सर हमने एक्सेल पर क्वेश्चंस किए, सर हमने सीबी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन किए, यू सेंड मी दिस स्क्रीनशॉट. व्हाई? टू वेरीफाई. अगर आप ये सारा कुछ मेंटेन करो एज अ ऑडिटर, इफ द ऑडिटर इज मेंटेनिंग, इन योर केस इफ यू आर मेंटेनिंग द एक्सेल फाइल एक्सेट्रा, व्हाई? टू गिव अ कंफर्मेशन कि सर मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने हार्डवर्क किया था, मेरे एग्जाम नहीं हुआ. तो सेम वे व्हाट द ऑडिटर विल डू फ्रॉम द डे वन व्हेन ही इज स्टार्टिंग द ऑडिट, वो क्या करेगा? सब कुछ डॉक्यूमेंट कर देगा. सो दैट एट द एंड आफ्टर 3 months और 4 months इफ एनीवन विल रेज अ क्वेश्चन दैट यू हैव नॉट डन द ऑडिट प्रॉपर्ली, तो वो क्या करेगा? वो सारा कुछ बता देगा, देखो मैंने इतना काम किया है, तुमको लगता है कि मैंने काम नहीं किया, ये देखो पूरा काम किया, पूरा लिखा हुआ है क्या क्या काम किया मैंने. So that is the reason auditor will maintain these documents. Everyone understood the basic regarding this ISA? Clear हुआ कि नहीं? I hope everyone this is clear to everyone. Now coming to the topics which we will be doing in this as well. The flowchart बना लो. As I mentioned, what are the topics we'll be covering? In your study hub, if you see, this is the chapter number. If you are referring to your study hub, from your study hub, we have completed chapter 1. We have completed chapter 5. This is chapter number 6, which we are doing. Chapter 2, 3, 4 are direct, which we'll be doing. And कल से chapter 7, 8, 9, 10, 11 वो चलेगा बेटे. So that your risk part will be completed. Then 12 to 17, your internal control part. उसके बाद में क्या होगा? Substantive procedure. उसके बाद में reporting का part. Yes, sir. So it's very important that you refer to the this one only. What we say? Study hub. Because ACCA क्या कर रहा अभी? ACCA is also referring to this one only. Study hub. A lot. So what are the topics we'll be doing, sir? First, we'll be doing the definition. इसका definition करेंगे. हाँ जी sir. Then we'll be doing the objective. Objective of auditor. Auditor का objective क्या है? क्यों कर रहा है documentation? Then purpose. This is the direct theory question as well, which I mentioned. Purpose or importance of audit documentation. This is the direct theory question that comes in the exam. Yes, sir. Then form, कंटेंट, जो कंटेंट आप लिखोगे डॉक्यूमेंटेशन में कैसा होगा, एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. यस सर. देन ओवर factors affecting. This is the second direct theory question that comes in the exam. Factors affecting the form, content, and extent of audit documentation as well. Audit documentation, yes, sir. Then you have content. This is the third direct theory question. Content of audit documentation. ये भी आता है 2 मार्क्स के लिए. Yes, sir. This is tested for 2 marks. Yes, sir. Then you have significant matters. Significant matters
नहीं, documentation of, write down this way, documentation of significant matters, and related significant professional judgment. थियरी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। Then, now the last point which I'll be doing again important from theory MCQ. Assembling of final audit file. Yes, sir. Then ownership of audit documentation. Then you have retention. कितने साल के लिए ऑडिट, ये जो भी डॉक्यूमेंट है कितने साल के लिए रखना है. All these are important for theory MCQs everyone. Retention of working papers. And then you have confidentiality. Then you have confidentiality. Confidentiality of audit documentation. Audit documentation. These are the points which are written in red are important for MCQ. So direct theory question आता नहीं है. MCQ comes for how many years should you maintain this documentation? कितने साल के लिए रखना है? किसको देना है? Whether you are the owner or not. All these are important for MCQ question in your section A. Yes, sir. First, we have understood the different types of engagement. Then we started auditor. अगर मैं auditor, if I am the auditor, what is my objective? Then we did ISA, two pre-condition of the engagement. When we accept the engagement, sir, audit engagement, or you say audit accept कर लिया sir. अभी क्या करेंगे? So these are the basic points which you have to keep in mind, that you have to document each and everything whatever you do in audit. सब लोगों ने लिख दिया, बताओ मुझे. लिख लिया सर. लिख लिया. चलो देन, कैन वी स्टार्ट एवरीवन? अपन अभी पूरा कंटेंट नहीं लिखेंगे, अंडरस्टैंड एवरीवन. वी विल नॉट बी राइटिंग द एंटायर कंटेंट हियर. ओके, द वन व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन वो अपन लिखेंगे. द अदर थिंग्स आई विल कॉपी पेस्ट हियर एंड वी विल हैव एन आइडिया. यस सर. ठीक है सब लोगों को? यस सर. अगेन सेइंग एवरीवन, कैप्लन में तो दो पेज ही है, एक पेज दिया हुआ, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन व्हिच आर ऑन स्टडी हब आर इन डिटेल द एमसीक्यूज. यस सर. तो चलो सर करते हैं. नाउ लेट अस डू दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. एज आई मेंशन एवरीवन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है? जब आप ऑडिट करते हो सब चीज को क्या करना है? संभाल के रखना है. सब चीज को क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू हैव टू मेंटेन दिस एंड यू हैव टू कीप इट. व्हाई सर? सो दैट इन फ्यूचर अगर बाई चांस कोई आए और बोले कि आपने कहा क्या काम किया है, व्हाट यू हैव डन, व्हाट द वर्क यू हैव डन शोज, सो दैट यू कैन शो इट इजीली. यस सर. तो नाउ एवरीवन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये आता नहीं है, ठीक है? ऑडिट documentation. Audit documentation. Yes sir.
Audit documentation refers to what, everyone? Refers to record of audit procedure. Record of audit procedure performed. Relevant audit evidence. जो आपके पास evidence है उसको भी संभालना है. That also you have to maintain. You have to document. Or relevant audit evidence obtained. And conclusion the auditor reached. Conclusion the auditor reached. Everyone will try, and we will try to do the MCQs from this also. What we say? Yes, study hub. Audit documentation. Audit documentation का meaning क्या होता है सर? Audit documentation means everyone record करना. We have to record. We have to maintain what? Audit procedure performed. When you do audit, everyone, आप क्या करोगे? Let's say I say that I purchased the iPhone. How will you check this? आप कुछ ना कुछ audit procedure perform करोगे. You will check what? You will check the iPhone. Yes or no? You will check what? The bank statement. वो जो भी आप कर रहे हो उसको मेंशन करना. क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया? What did you check? Did you check the whether physically the iPhone is available with the company or not, whether invoice is there or not, whether you have checked the bank statement. आपने क्या किया? What did you perform? A audit procedure. What is that audit procedure you have performed? आपने कौन सा audit procedure perform किया है? That you have to mention. So what are the examples of audit procedures? Whether did you observe, whether did you inquire, or you can say inspect. आपने कुछ document को check किए. These all are what, everyone? Audit procedure. Did you take any confirmation from the Apple store key? Okay, this person has purchased the iPhone or not? All these are the procedures which you perform. Why do you perform this? To check whether that item is correct or wrong. Now आपको क्या करना? इसको भी मेंशन करना, इसको भी मेंटेन करके बोलना है कि ओके सर मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था. यस. Then what? And also relevant audit evidence. Whatever evidence you have got. Let's say when you perform the audit procedure, when you get the bank statement, you get the invoice, etc. All this what? ये भी audit evidence. इसको आपको maintain करके रखना है. Yes sir. And conclusion that the auditor reached. When you have formed the conclusion, everyone, जब आपने conclusion बनाया, on what basis did you give the conclusion that everything is good or bad? That also you have to document. सबको clear? Understood what does audit documentation is? Audit documentation just means what? To record what's your audit procedure perform. Relevant audit evidence जो भी है evidence मिला है उसको, and conclusion the auditor reached. Clear सबको? Yes sir. So what are the examples that we should document? Sir क्या क्या document करोगे? देखो audit plan. When you plan the audit, everyone, see audit कैसे करेंगे सर? उसका पूरा ये बना है, एक्सेल शीट में पूरा बना है. ये दिन ये करेंगे, ये दिन उसको भी रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है. Audit plan and program. Yes sir. Then schedule, any schedule which you have prepared, that also you have to maintain. Yes sir. All these are the examples of what? Audit documentation. Then report to management. If you are sending any report to management, that also what? You have to document कि मैंने मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट दिया था और उसको भी मैंने मेंटेन किया. मैंने एक कॉपी लेके रखा. आई हैव गिवन द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. आई हैव अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस. Then sir, email. Then what sir? Text messages. All these should be done what everyone? All these should be documented. Yes sir. All these should be documented. Then checklist. You have made a checklist कि सर ये काम आज करेंगे, कल ये काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे. वो पेपर बनाए उसको भी स्टोर करके रखो. यस सर. एवरीवन क्लियर व्हाट डज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस?
बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं? नसरा, हर्ष, क्लियर है? Yes, sir. यस, पक्का समझ में आया बेसिक डेफिनेशन? यस सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर क्यों मेंटेन करेगा सब कुछ? क्यों करेगा वो? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, यस सर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्रिपेयर, लिख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन टू प्रोवाइड व्हाट? Sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient and appropriate records. Sufficient and appropriate records. For what purpose, sir? For the auditor's report. In your school, everyone, when you write your exams, etc., XYZ, when you get your report card, school क्या करती है? What does your school do? Whatever scripts which you have written, जो आपने answers लिखा, etc., they maintain it. That is same like what? Maintaining the documents, yes, sir. And evidence that the audit was planned and performed. Planned and performed in accordance with ACCA. Yes, sir. ACCA and applicable legal and regulatory requirement. Yes. This is the objective. लिख लो सब लोग। As mentioned, 4 to 5 class I'll be going slow अभी। नेक्स्ट क्लास से अपन ऑडिटर्स चालू करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। बट बिफोर दैट सम बेसिक थियरी क्वेश्चंस आर गिवन 7 to 8। तो आज भी एक दो क्वेश्चन रहेंगे और अपन पास्ट पेपर भी करेंगे, यस सर। तो दिस शुड बी योर फ्लो। हाँ, you have to understand the ISAs in a basic point of view. I say till September 2027, you have to understand the basic, how to basic of the ISAs. After that, you have to understand the ISAs also in detail, because the MCQs will be in detail. अभी तो आप lucky हो if you're giving the exam before September. After that, MCQs will be more. And when coming to MCQs, you know कि sir theory वाले MCQs में तो problem रहती है sir. लिख लिया सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव? Sir, lift लिया. लिख लिया बेटे? So the first part is clear, sir. Audit documentation का meaning क्या है? We maintain each and everything. What all we maintain, sir? Audit procedure which we have performed, audit evidence जो मिला, and conclusion the auditor has reached. जब अपन ने conclusion बनाया, on what basis? That also we have to document. हमको लिख के रखना है कि ये था, ये मेरा सोच था. This was my thinking at that time and I have done this, yes sir. Now coming to the objective. Why will the auditor do this? Auditor सब कुछ क्यों maintain करेगा? Now when you have given your class 10th board exam also, can I say if you think कि सर मेरा मार्क्स कम आया, तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन गेट योर कॉपीज फ्रॉम गवर्नमेंट। सेम वे हियर एवरीवन, ऑडिटर भी क्या सोचेगा? ऑडिटर विल आल्सो से दैट once I've done with the audit, after
4 months, 5 months, or 3 months. If someone will come and say कि आपने क्या काम किया है, that is the reason I'm doing documentation. The objective of the auditor is what? To prepare documentation to provide what? Sufficient and appropriate record. For what, sir? जो audit report बनाया, for the audit report. And evidence that the audit was planned. Evidence है, proof है कि audit plan किया था और उसको किया था भी. We have planned the audit and performed in accordance what? AISAs and applicable laws and regulatory requirement. हमने कानून, जो कानून था इंडिया का, on that basis we have prepared what? The audit report, and we have done each and everything what Modi ji has mentioned, that how the audit should be done, and we have also followed what? AISAs to do the audit. Yes. किसी को इसमें डाउट? वो भी आएगा नहीं. Just you have to understand auditor क्यों कर रहा है? To be on a safer side. Simple. Yes. Yes, sir. Now coming to the next thing, everyone, that is very, very important and a direct theory question. Sir, अभी इसका auditor का objective ये है. Auditor is saying that, okay, my objective is to maintain records and to provide evidence that the audit was done. Now, sir, what is the purpose? What is the importance of this audit documentation, which is a direct theory question? Purpose, objective, and or you say importance, or you say importance of, or you say importance of audit documentation. Yes, sir. Why? Direct theory question? Yes, sir. The first one. Again, same, the first point is same, provides evidence that audit was planned and performed as per AISAs and applicable legal and regulatory requirement. Yes, sir. Then the second one. Same, the objective, जो objective था वो first 2 points are same. Then you have other points, yes, sir. Then provides evidence. लिख लो everyone, I'll explain. The first 2 points are same. Evidence of the auditors basis for the conclusions. Objective. Yes, sir. Then write down the third point, everyone. Assist the engagement team to plan and perform audit. Fourth one.
assist the team members to direct, supervise, and review of audit work. That is DSR. DSR. Enables the audit team to be accountable for its work. Yes. Sixth one. Retains a record of matters of continuing significance for future audit. Enable the external quality inspection to be performed. राइट डाउन में एक्सप्लेन करूंगा. लिख लिया सब लोगों ने? बताओ. लिख लिया सर. लिख लिया? अदर्स प्लीज डन. यस और नो? कंफर्म. लिख लिया सर. लिख लिया पक्का? चलो. नाउ सी एवरीवन, this is a direct theory question which comes in the exam. So now ये जो purpose objective same thing we'll be learning in ISA 300 also, where it is from the audit planning point of view. तो ये दोनों repeated questions ये थे. Now first we have understood sir audit documentation का meaning क्या होता है, to record each and everything. Then we understood what is the objective of auditor, that to maintain what sufficient appropriate record on what basis they have prepared the audit report. Then evidence that the audit was planned and performed as per ISAs के हिसाब से, whatever is the law saying we have followed that. Now the purpose, object and importance of audit documentation. Why it is important to document each and everything, everyone? Again, the first point is same, that it provides evidence. क्या evidence sir? कि audit को plan किया था और audit को perform किया था as per what? ISAs. We had followed the auditing standards and applicable law, sir. Yes, sir. Then it also provides what? Evidence of the auditor's basis for the conclusion reached. It provides what? When auditor is giving a conclusion, auditor is saying everything is good. On what basis he is giving that conclusion कि सब बढ़िया है? Evidence ही है. Yes, sir. That evidence is what? That evidence is documented and achieve the objective of the audit. Yes, sir. Then everyone assess the engagement team to plan and perform audit.
Now देखो everyone, when I am doing the audit of your company, मैं अकेला कर लूंगा क्या audit? Or can I say I will have a team? I will be the leader. मैं एक लीडर रहूंगा. I will be the leader. I will have a team, and that team will be doing the audit, and I will be guiding that team. So everyone, what will I do? I will maintain each and everything. I'll document each and everything. Why? It will help the engagement team. जो मेरे team members हैं उनको समझ में आएगा कि audit कैसे प्लान किया और ऑडिट कैसे परफॉर्म करते हैं. इट असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. उनको हेल्प करेगा. दिस डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प इफ दे गेट स्टक एनीवेयर. ओके, इसके बाद में क्या करना है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ काम है, ये देख, इसको फॉलो कर. यस सर. देन असिस्ट द टीम मेंबर्स टू डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क. एज अ लीडर इट विल हेल्प यू व्हाट, टू डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द ऑडिट वर्क. किसका सर? जो मेरे टीम मेंबर्स कर रहे हैं. Assist the team members to direct what should you do, then supervise whether you have done everything or not, and review of the audit work. That is DSR. Yes sir. Then enables the audit team to be accountable for its work. How they will be accountable? Okay, इन्होंने काम किया, उन्होंने record किया, okay, they are accountable. That means okay, they have done their work properly, we can check it. Then retains a record of matters of continuing significance for the future audit. इसका मीनिंग क्या हुआ सर? Now current year I am doing audit everyone. अगले साल भी मैं audit करूंगा आपका. Next year also I will do audit. Let's say you purchased a property everyone. You purchased a property. What will I check? I will say आप लोगों ने property purchase किया है, उसका agreement होगा, उसका document होगा. You will have the property papers. Give me so that I can check. So now everyone, if I have taken that copy from you, जो properties के paper है मैंने आपसे ले लिया. So everyone, for the next year also, will I again ask you? No, because I know ये जो evidence or the one which I've taken from you will help for my next year audit and the further years audit also. To maintain what? To retain a record of matters of continuing significance for future audit. So it will help us to maintain record so that we can use in future if we have any problem there. Yes, sir. Then enable the external quality inspection to be performed. When someone is saying that you have done the work, etc., after 3 months they come and they question you. अरे आपने काम किया था क्या, किधर किया बताओ. So in that case, it will help you to provide that key. See, this is the way we have done the work, so that the other person can inspect. Yes sir, कि आपने कैसे काम किया था. अगर मैंने काम कर दिया, किसी को मेरे काम पर डाउट है, तो वो क्या करेंगे? They will call a third party and they will say you inspect whether the work which is done by this auditor is right or not. Yes sir. सबको समझ में आया? What is the purpose of maintaining this documentation? The first one is what everyone? क्या है? Evidence है. किसका sir? That audit was performed and planned. Then evidence for the auditor for the basis of the conclusion which they have mentioned. Then it will assist the engagement team to plan and perform the audit. Then it will assist the team member to what? DSR. Direct, supervise and what? Review the audit work. Yes sir. Then it will help us to do what? Audit team will be accountable as they have documented each and everything. Yes sir. Then it helps to retain record for continuing matters in the future. Yes sir, which will be coming. And then it can enable what? External quality inspection to be performed. अगर कुछ इंस्पेक्शन कराना, मेरे काम पर भी डाउट है, वो भी चेक कराना, तो किसी और से चेक करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज आई मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर एवरीवन दीस पॉइंट्स? समझ में आए? पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? यस और नो एवरीवन? बताओ बताओ बताओ. टेक योर टाइम एवरीवन. एक बार आप लोग भी पढ़ो. डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन एक कीवर्ड चाहिए. 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स. So I've given 7 points. Remember any 5 points. So it becomes easy in your exam. Hardly 2 questions है. 2020 and 2015 दो बार आ चुका है. Okay, sir. Done? Yes, yes. Yes, चलो. sir. So we have done with the first 3 topics. हाँ जी sir. Yes. Now coming to the next part, everyone. Now coming to the next part. So next part क्या होगा अभी? The next part will be everyone. Form, extent, and the content of this one, everyone. Form,
एक्सटेंट, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। अभी धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। कंटेंट क्या होगा, हाउ विल यू प्रिपेयर, एक्सेट्रा, एक्स वाई जेड। एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यस सर। दिस एवरीवन, ये बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है स्टडी हब में। इट्स मेंशन इन डिटेल एवरीवन। इफ यू सी कैप्लन, कैप्लन में तो खाली 2 लाइन दिया हुआ है इसके बारे में। इन स्टडी हब दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट वी विल राइट डाउन सिंपल पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं। यस सर। सर, यस बेटे। डेमो लेक्चर आज लास्ट है। हाँ, किसका? ऑडिट का क्या? हाँ, ऑडिट का आज लास्ट है बेटे। ऑडिट का भी है, एफआर का। एफआर में तुमने ले लिया ना एडमिशन? एफआर में कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर, एफआर का तो है। यस सर। So see everyone now, when coming to the form, content and extent of audit documentation. Form, इसका form कैसे होगा? How it will be? Then content, what is the content you will be writing in this audit documentation? And the extent, कितना audit documentation करना है? Should you make a audit documentation of 100 pages, 200? So what is the level of audit documentation you have to maintain? अभी देखो everyone, if the company is very big, everyone, you only say, if the company is very big, the documentations will be more or less. सर, जितना, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेक, सिंपल। सो बिगर द कंपनी, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच यू हैव टू मेंटेन विल बी मोर। स्मॉलर द कंपनी, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच यू हैव टू मेंटेन विल बी लेस। क्लियर सबको ये? यस। सो लिख लो ना ये। A1, A point, documentation should be sufficient to enable an experienced auditor with no previous connection to the audit to understand, to understand to understand nature, timing, and extent of audit procedure. Whatever audit procedure you have done, उसका नेचर क्या है, कब किया था उसको, एंड कितना किया था। यस। देन the result of audit procedure. When you perform the audit procedure, what is the result did you get? Was it positive or negative? And evidence obtained.
Then significant matters. Then significant matters. If there are any significant matters जिस पर आपको बहुत ज्यादा डाउट लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, that we have to maintain a record. Significant matters arising during the audit and conclusion reached, and also significant professional judgment made in reaching the conclusion. सबको क्लियर है? This is about what, sir? This is about the extent. Audit documentation should be sufficient to enable an experienced audit with no previous connection to the audit to understand. मैं audit कर रहा हूं. After 2 months, some other person will come. Let's say मैं छुट्टी पर चले गए due to some family issue. I'm not there. So if a new auditor comes, everyone, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कितना काम हुआ क्या नहीं? In that case, everyone, this documentation should be done in a such a way that if some other auditor is coming who has experience, he should understand each and everything. He should understand the audit procedure which I have done, what is the evidence I've obtained, and if there are any significant matters. Significant matters का meaning क्या होता है? बहुत कुछ important है क्या कुछ? Is there an important area that you have to mention? And if you have taken any judgment, each and everything should be mentioned. समझ में आया सबको? Audit का काम कितना करना? What is the extent? To what extent you have to do the documentation? You have to do the documentation in a such a way that if the auditor is going on a leave for 1 month, अगर 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है, तो कोई नया ऑडिटर आएगा तो उसको पूरा समझ में आना चाहिए. Audit procedure. What is the nature of the audit procedure? Did you do inspection, observation? आपने क्या किया? Did you get a confirmation from a third party? कब किया था? टाइमिंग 2 महीने के पहले, 1 महीने के पहले, कब किया था? Yes sir. And when you have done this audit procedure, आपको कुछ ना कुछ evidence मिला होगा. Yes sir. What is that evidence to support your conclusion? And then any significant matters arising and significant judgment which you have taken to reach the conclusion which you have given. Yes sir. समझ में आया इधर तक? बताओ. Yes sir. So with this everyone, this is done. This is relating to what everyone? This is relating to the extent everyone. कितना काम करना चाहिए? Yes sir. Now we will come to what everyone? We will come to the content. Sir अभी content क्या क्या होगा? Content which is also repeated in the exam for 2 marks everyone. Which is also what? Repeated in the exam. Yes sir.
So see now, content of what? Audit documentation. Yes, sir. Now everyone, audit documentation को क्या बोलते हैं? Working papers also we say. Some will say audit documentation, whatever you have maintained. Some will say what? Working papers. Yes, sir. Now what are the content in this, everyone? Name of the client, everyone. पहला क्या है? Name of the client. Yes, sir. Then year end date. What is the year end date? Yes, sir. Then subject matter. Subject matter क्या है? That you have to mention. Then working paper reference. If you have taken a reference, वो भी आपको बताना है. You have to mention that reference also. Yes, sir. Name of the preparer. कौन बना रहा है इसको? Date of preparation. Name of the reviewer. Is there a person who will review my work? And date of review. सर Yes. सर फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा? नेम ऑफ द Preparer. अरे name of the preparer and the date of preparation. Objective of the audit work. Audit test. And audit procedure performed. Then what? Details of what? Same thing. Audit work, audit test, audit procedures. Then result. Result of the same. Audit work, audit test, audit procedures. And the last one was conclusion. The last one is what, everyone? Conclusion. What is the content in the audit documentation? हुआ कि नहीं बताओ लिखना. हो गया सर. हो गया. अदर्स? सर हाँ बेटा. सर ये वो कंटेंट है जो ऑडिट डॉक्यूमेंट में होता है. क्या क्या? ये वो कंटेंट है जो ऑडिट डॉक्यूमेंट में होता है. वापस आओ, सुने नहीं दे रहे, क्या बोला? जो हमने कंटेंट लिखा है हाँ हाँ. ये सर. अच्छा. डॉक्यूमेंट में रहेगा. डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या? आप एक्सेल फाइल मेंटेन करते हो कि नहीं? अभी लेट्स से कि अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो एफआर के लिए, ऑडिट के लिए. आप स्टार्ट करोगे ना कि फ्रॉम दिस डेट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन.
ये चीज अब करूंगा, 10 दिन के बाद में ये करूंगा, इस दिन के बाद में टेस्ट दूंगा, ये सब वही तो यस सर। कंटेंट हुआ ना, सेम वे. So everyone see now everyone. What is the content of that audit documentation? Audit documentation में क्या है? See everyone remember audit documentation क्या होता है? You document the entire audit, whatever you have done. आपने ऑडिट कैसे किया, क्या क्या ऑब्टेन किया एविडेंस, वो सारा कुछ आप डॉक्यूमेंट करोगे, लिखोगे. जैसे थीसिस रिपोर्ट लिखते कि नहीं, जब एक मूवी बनती है, व्हेन यू मेक अ मूवी एवरीवन वी राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग और नॉट, ये सीन के बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, सेम वे हियर आल्सो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. द नेम ऑफ द क्लाइंट, ईयर एंड क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, what is the subject matter, then working paper reference, if you have taken any reference from anywhere, mention that. Then name of the preparer and the date of preparation, then name of the reviewer, कौन रिव्यू कर रहा है इसको, who is doing the review of this, yes sir. Then what sir, objective of the audit work, audit work का objective क्या है, what is the objective of audit work, audit test and the audit procedure performed, then what is the detail, then what is the result of each and everything and the conclusion. ये सारा कुछ क्या है, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. each and everything you have to document. सबको समझ में आया? what is the content, yes sir. ये आता है the content, frequently I've seen in exam the content and the purpose, ये दोनों क्वेश्चन है ना साथ में आते हैं. for 5 marks write down the purpose, for 3 marks and 2 marks what is the content in the audit document, yes sir. yes sir. Now, sir, this is done, sir. ये भी समझ में आ रहा. Now, coming to the next one, that is the factors affecting. Factors affecting. Factors affecting the content, the form, content, and extent of audit documentation. Sir, audit documentation कैसे affect होगा, sir? Audit documentation will be affected for multiple reasons, yes, sir. The first one is size and complexity of the entity. Size and complexity of the entity. Sir, if the entity is big, sir, entity बहुत ही ज़्यादा complex है. There are multiple businesses they do. Like Reliance company, sir, Reliance company बहुत बड़ी है and they have multiple businesses. In that case, everyone, your audit documentation will be less or more. More audit documentation will be done. Yes, sir. Audit documentation कैसा होगा? ज़्यादा करना पड़ेगा, sir. The documentation will be more. Yes, sir. Then, nature of audit procedure performed. Nature of audit procedure performed. सर, हमने जो ऑडिट प्रोसीजर है, सर मैंने आईफोन को चेक भी किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट भी लिया, सर आई हैव टेकन द इनवॉइस आल्सो, आई गॉट अ कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी आल्सो. इफ यू परफॉर्म मोर ऑडिट प्रोसीजर, अगर आप ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो कैन आई से योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल आल्सो व्हाट, योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगेन विल इंक्रीज एवरीवन. अगर आपने ज्यादा प्रोसीजर किए तो योर डॉक्यूमेंटेशन साइज आल्सो विल इंक्रीज. यस सर. यस सर. Then identify risk of material misstatement. Risk of material misstatement. Material misstatement. हाँ जी सर. सर, कंपनी में बहुत ही ज्यादा रिस्क है. एवरीवन, इफ द रिस्क इज मोर, अगर रिस्क ज्यादा है तो व्हाट विल यू डू? ऑडिट प्रोसीजर्स, जो आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे वो क्या होगा? सर ज्यादा होगा. अगर वो ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो विल बी मोर एवरीवन. डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो विल बी मोर. सर रिपीट कर दो, हाँ. ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो. यस यस. सर कंपनी बड़ी है, सर कंपनी बड़ी है, साइज बड़ा है कंपनी का, तो ज्यादा काम करोगे तो डॉक्यूमेंट भी ज्यादा बनेंगे.
Then sir, nature of the audit procedure. Sir, जो procedure हमने किए बहुत सारे किए. If you do a lot of procedures everyone, in that case what will happen? In that case what will happen? Your documentation size will increase. You say कि sir हमने ना सारे 30 questions practice किए Excel पर, तो can I say your Excel file size will increase or not? In Excel, if you practice 30 questions, the size of the Excel will increase. There are multiple sheets. Yes, sir. Then risk of material misstatement. Sir, मैं बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ. Sir, when I'm doing the question, sir, मैं बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ. अगर आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कि नहीं? If you practice a lot, can I say your pages will increase or not? The book size will increase. Instead of one book, you will be having two book now. जितना मिस्टेक होगा, if multiple mistakes are there, you will perform more audit procedure, you will practice more, and with this your documentations will increase. Yes sir. समझ में आया बेटे? यस सर. Think like your school exam only everyone. ये पूरा है ना ऐसे कनेक्ट करो कि it's about your this one your exam. When you're doing the practice everyone, you say कि सर हमने पूरा एक बुक में लिखा था सर, वी हैव डन गुड प्रैक्टिस सर, पूरा कैप्लन किया था. मैं बोलूंगा कि कैप्लन करने के बाद में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बीबीपी करो. तो कैन आई से योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल इंक्रीज बिकॉज यू आर रेफरिंग टू मल्टीपल रिसोर्सेज. यस सर. देन significance of ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. सर जो ऑडिट एविडेंस हमको मिला है, sir, audit evidence also we have received more. If you have received more audit evidence everyone, what will happen? Your documentation also will be more. अगर एविडेंस ज्यादा है आप लोगों के पास, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस, then what will happen? Your documentation, the size of the documentation or your documentation also will be affected. Yes sir. Point number 5 everyone. More the audit evidence you have, your audit documentation will be affected. Audit documentation का मीनिंग क्या? ऑडिट कैसे किया उसको पूरा लिखना है. You have to maintain each and everything. Yes sir. Then nature am I audible everyone? आवाज आ रही है ना? यस सर. Yes yes okay. Okay. Nature and yes sir, आवाज आ रही है. okay, nature and extent of audit, nature and extent of exceptions identified. Then last one, write down audit methodology and tool used. Used, yes. These are the factors which will affect the audit documentation. Audit documentation ज्यादा होगा कम होगा depends upon these 6 factors everyone. कंपनी का साइज कितना बड़ा है कि छोटा है. Then the nature of audit procedure performed. Are you performing more audit procedures or less audit procedure? Then identified risk of material misstatement. If
there are lot of material misstatement, you will increase your audit procedure. If you increase your audit procedure, your audit documentation will be affected. Then coming to the significance of audit evidence obtained, you have obtained a lot of audit evidence. आपने बहुत सारा एविडेंस ऑब्टेन किया, अगर बहुत सारा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया तो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको स्टोर करना, सबको मेंटेन करना, सब कुछ करना पड़ेगा. देन कमिंग टू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड एवरीवन. सर इसका मीनिंग क्या है? देयर आर सम एरियाज एवरीवन वेयर देयर आर लॉट ऑफ एरर्स. अगर बहुत ज्यादा एरर्स है, इफ एरर्स आर आइडेंटिफाइड, इफ द एरर्स आर मोर एवरीवन, अगर एरर ज्यादा है तो आप क्या करोगे? यू विल डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. इफ यू डू मोर इन्वेस्टिगेशन, योर वर्किंग पेपर विल इंक्रीज. जो आप काम करोगे उसको लिखना पड़ेगा, तो वो भी बढ़ जाएगा. ये सब. देन ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड everyone. Then again it depends which tool you are using, how are you conducting the audit, each and everything. देखो, if you sit and write down each and everything, it will take time. If you're doing with the help of electronic form, it will become easy for you. So that also depends everyone. Whether you're doing the audit documentation in detail or खाली ऊपर से ही कर रहे हो ऐसे से, each and everything will be done. These are the factors everyone which will affect what? The content of what, sir? Audit documentation. These are the factors which will affect the audit documentation. Like when you're doing the audit, आप sampling कर रहे हो, whether you're checking each and every transaction. If you check each and every transaction, your audit documentation will be affected. Whether you're doing sampling, whether you're checking the ratios or not, whether you're using any computer technique or not, any AI, etc., XYZ, or whether you're inspecting the documents individually. Yes, sir. All these are the factors which will affect what? The size and what, sir? The size of the audit documentation. Yes, sir. क्लियर इधर तक? फैक्टर्स अफेक्टिंग बताओ. Yes, sir. So with this everyone, this also we have done. This is a repetitive question: factors, content, and the purpose and importance of audit documentation. Yes, sir. ये sir ये नहीं आता है. It's not tested everyone. Yes. So with this everyone, main direct theory repeated questions we have done. That audit documentation का meaning क्या होता है? What is the content everyone? What are the factors affecting? Then what is the purpose? Objective क्या auditor का? Yes, sir. हुआ? हाँ जी सर, हो गया. चलो ना सर, दिस इज डन, वी हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ एवरीवन, व्हेन यू डू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आप करंट ईयर में ऑडिट कर रहे हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन 2 साल के बाद में करोगे क्या, कि करंट ईयर में करना पड़ेगा? अरे करंट ईयर में करना पड़ेगा. इफ यू आर डूइंग द ऑडिट इन द करंट ईयर एवरीवन, एज सुन एज यू आर डूइंग द ऑडिट, जब आप ऑडिट स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग. सो द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट? Timely preparation of what? Timely preparation of audit documentation should be done everyone. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जब ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सब इकट्ठा करते हो, तो बराबर टाइम पर करना है. यू हैव टू डू एट अ प्रॉपर टाइम एवरीवन. इट शुड नॉट बी लेट. अगर लेट हो जाएगा तो कुछ काम का ही नहीं है. यस सर. व्हाई? सी, इफ परफॉर्म्ड ऑन टाइम, accurate, that is more accurate, it will be what everyone? More accurate. If performed later on, so 6 महीने के बाद में करेंगे,
accurate. Because today if you're doing the work, you will be knowing कि आज आपने क्या किया, 6 महीने के बाद में याद होगा क्या क्या किया नहीं. Yes. So the audit documentation should be done on a timely basis. Should be done on a timely basis. Yes, sir. लिख लिया सब लोगों ने इधर. ये समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन टाइम पर होना चाहिए. अगर टाइम पर होगा तो इट विल बी गुड एनफ, इट विल बी एक्यूरेट वन. इफ यू आर डूइंग आफ्टर 6 months 3 months, you will not remember what you have done properly, so it will not be accurate. Yes, this is done. Now coming to the next one, everyone, that is, these are important for theory MCQs, everyone. Assembling of audit file, everyone. Assembling of what, everyone? Audit file. Yes, sir. So audit documentation will be will be assembled in a audit file. In a audit file. Assembling of audit file, sir. सर इसका मीनिंग क्या होता है? नाउ सी एवरीवन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने डॉक्यूमेंट किया ना उसको एक फाइल में रिकॉर्ड करना. ईदर यू स्टोर इन योर कंप्यूटर और ईदर यू स्टोर इन अ बॉक्स और इन अ ड्रॉयर एक्सेट्रा. यस सर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किए सबको क्या करना, इकट्ठा करना और स्टोर करना. इन व्हाट? इन अ ऑडिट फाइल. एवरीवन, दैट ऑडिट फाइल कुड बी व्हाट, in your computer also, or it can be done manually also, depending on. Yes sir. Sir, कितने दिन में assemble करना है? Each and everything should be assembled. All the audit documentation should be assembled in how many days? In how many days? 60 days. 60 days. Within 60 days. From what, sir? From the date audit report, audit report, audit report date, auditor's report date. That means auditor has given the audit report today. From today, that is the coming 60 days, within that each and everything should be assembled together. सबको इस एक साथ में रख देना चाहिए. Yes sir. Sir, this assembling is what, sir? This assembling is what? An administrative process. It is what, everyone? It is an administrative process. ये कौन सा प्रोसेस है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. नाउ डू नॉट से कि सर ये ऑडिट प्रोसीजर है. दिस नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर, एवरीवन. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. यस सर, नॉट ऑडिट प्रोसीजर. यू आर नॉट चेकिंग हियर. व्हाट आर यू डूइंग? आप चेक नहीं कर रहे हो कुछ, आप सारा इकट्ठा कर रहे हो. सिंपल. यस, you are gathering whatever you have done, you have just gathering that, and you have to gather this within 60 days from the date the auditor has given the report. और सर ये ऑडिट प्रोसीजर होता है क्या? अरे आप कुछ चेक नहीं कर रहे हो, खाली इकट्ठा कर रहे हो. क्या इकट्ठा कर रहे हो? सो जो भी काम किया उसको इकट्ठा करना है. यस सर, सिंपल.
समझ में आया एवरीवन? Assembling of audit files. You have to assemble within 60 days, and it is an administrative process, not an audit procedure. It is an administrative process. It's a normal work of the auditor which he has to do. हुआ लिखना बताओ the important points for MCQ. हो गया सर। हुआ लिखना? Yes. Others done? Please confirm. Yes, sir. Done. Okay. So see everyone now. हमने क्या क्या किया? When coming to this definition, we discussed objective done, purpose we have done, form and extent we have done, factors affecting, then content also we have done. Then ये अपन ने नहीं किया अभी तक. Yes, sir. Then assembling of audit file is done. Yes, sir. Now these, as I mentioned, are very very important for the theory purpose. Now coming to the confidentiality, everyone. Now आप लोगों को क्या लगता है? When coming to auditor, everyone, auditor सब कुछ document करेगा, सब कुछ store करेगा. Where will he store? ऐसे ही रख देगा क्या ऑफिस में? Or will he store this in a locker? What will the auditor do? The auditor will store this in a locker, everyone. The auditor will do what? Auditor will store this in a locker because it should be kept confidential. Because ये सबको नहीं मिलना चाहिए. जो हमारा काम है, ये जो documents हमारे पास रहने चाहिए. Yes, sir. So the next one is what, everyone? Confidentiality. Confidentiality. Confidentiality and safe custody of working papers. Either I say working papers or either I say what? Audit documentation. एक ही बात है. Working papers. Yes, sir. Simple. What I say? Working papers must be kept what? Must be kept confidential. It should not सर be given to everyone. Yes? सर ये फैक्टर्स तो नहीं है, क्या? ये फैक्टर्स तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये फैक्टर्स नहीं है बेटे. फैक्टर्स तो हो गए ना. अभी जो ऑडिट का यस। काम पूरा किया उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, उसको सब कुछ लिख दिया. अभी उसको सबको देना है क्या? नहीं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है. यू हैव टू कीप विथ यू ओनली. ओके सर। यस सर. यस सर, यू हैव टू कीप. सर, इफ हार्ड कॉपीज आर देयर, सर हमने हार्ड कॉपीज मेंटेन किए. इफ हार्ड कॉपीज आर देयर, हाउ विल यू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी? यू विल लॉक इट. लॉक्ड कैबिनेट, दैट इज ड्रॉयर में लॉक करके ताला दे दो. और सिक्योर्ड रूम्स. Yes, sir. Sir, if it is in electronic form, sir, if it is in electronic form, sir, what we will do? Everyone, if it is in electronic form, you will create what? Passwords? Password create kar do, so that no one will be able to access it. Yes, sir. Then have backup relating to this. Encryption kar lo, data ka encryption kar lo, so that no one can take it. Yes, sir. And backup should also be there. Regular backup should also be there. Yes, sir. कॉन्फिडेंशियलिटी इन सेफ कस्टडी ऑफ द वर्किंग पेपर. जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट किया उसको सेफली रखना है. सर अगर हार्ड कॉपी है तो उसको ड्रॉयर में रख के ताला दे दो. सर अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको पासवर्ड डाल दो, सो दैट नो वन कैन एक्सेस इट. यस सर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रहता है ना, वो किसी को देना नहीं चाहिए. इफ आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ योर कंपनी, इफ आई जस्ट कीप द डॉक्यूमेंटेशन आउटसाइड, anyone can come and they can take it. It will be a problem. Yes sir. So confidentiality is done. Yes sir.
Written, sir. Written? Yes, sir. Yes. सर नाउ व्हेन कमिंग टू दिस सर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है सब कुछ किया है सर कितने साल के लिए रखेंगे आप लोग ही बताओ। आप लोगों ने आपका क्लास 11th और 12th का एग्जाम लिख लिया सर अभी लेट्स से नाउ व्हेन कमिंग टू दीज मार्कशीट आर विद योर लेट्स से स्कूल फॉर हाउ मेनी इयर्स दे विल कीप इट। या अगर आपने कोई एग्जाम भी दिया है एफआर एग्जाम हो गए जो एफआर के बुक्स पड़े आपके पास एंड ईच एंड एवरी मटेरियल विच यू हैव रेफर्ड कितने साल तक रखोगे आप लोग एनीवन एनी आइडिया। अपने एफआर के अच्छे खासे नोट्स बनाए सब कुछ किया नाउ फॉर हाउ मेनी इयर्स यू विल कीप दीज नोट्स फॉर 10 years 15 years 2 साल 6 महीने 3 महीने क्या लगता है सब लोगों को। सर जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद बस। जब क्लियर हो जाए उसके बाद में नहीं रखोगे बट मैं बोलता हूँ कि एफआर व्हेन यू कंप्लीट योर एफआर कैन आई से दैट एफआर नॉलेज विल हेल्प यू इन एसबीआर तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू फिर रख यू कीप लेंगे इट और सर। नॉट। यस सर। सर जब तक एसबीआर का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता सर जब तक एसीसी नहीं होगा क्लियर सारे बुक्स रखेंगे सर। Sir, whatever resources we have referred, until we clear all the ACCA 13 papers, I will keep all the resources. Here also, when coming to retention, everyone, sir, ये जो काम किया हम लोगों ने, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरा बनाया है, जो एविडेंस सब इकट्ठा किया है, कितने साल तक रखना चाहिए? For how many years you have to keep this everyone? Retention of working papers, everyone. Retention of what, everyone? वर्किंग पेपर्स यस सर कितने साल के लिए आपको रिटेन कराना पड़ेगा इसको यस सर दैट इज हाउ मेनी इयर्स एवरीवन कितने साल के लिए रखना दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट लीगल लीगल लॉज ऑफ ईच कंट्री। हर एक कंट्री का रूल अलग हो सकता है बेटे ईच एंड एवरी कंट्री कैन हैव अ सेपरेट रूल यस सर। सर बट व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट what is the basic requirement the basic requirement is what not less than not yes is no, that is basic requirement is what more than 5 years कितने साल के लिए 5 साल के लिए सर इस किसने बोला है IAASB बोर्ड दैट इज दी ऑडिटिंग बोर्ड ने क्या बोला दैट यू हैव टू मेंटेन दिस फॉर मोर देन 5 years बट सर एसीसीए क्या बोल रहा है व्हाट इज एसीसीए सेइंग एसीसीए इज सेइंग दैट यू हैव टू कीप दिस फॉर 7 years the board is saying for more than 5 years ACCA is saying fixed rule that is for 7 years you have to maintain this record yes sir you have to maintain this audit documentation if you have done the audit today 7 साल for the coming 7 years you have to keep each and everything yes sir you have to keep each and everything yes sir then when coming to tax file जो टैक्स के फाइल होते हैं this should be retained for how many years this also should be retained for 7 years everyone ये भी 7 years के लिए ACCA is recommending that you have to keep this for 7 years टैक्स फाइल्स अगर आप टैक्स का ऑडिट कर रहे हो कि सर जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है मोदी जी को कितना टैक्स पे करना है उसका भी ऑडिट होता है दैट ऑल्सो यू हैव टू रिटेन फॉर 7 years but the basic requirement the standard is saying what it should be more than 5 years but ACCA is saying 7 years but if the country law is saying something else then follow that everyone then we have to follow that yes sir देखो all these which I'm mentioning are important for MCQ केस स्टडी में आते हैं एमसीक्यूज कॉन्फिडेंशियलिटी रिटेंशन देन ओनरशिप ऑफ द ऑडिट देन टाइप्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो भी करना अपन को देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर थियरी द फर्स्ट 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थियरी डन अभी जो भी काम किया उसको कितने साल तक रखना है सर उसको किसी को देना है नहीं देना आपके पास ही रखना कितने साल के लिए सर 7 साल के लिए सर वंस दी ऑडिट वर्क इज डन सारा कुछ जो ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बना कैन वी गिव दिस टू क्लाइंट वी हैव टू कम टू दैट ऑल्सो और इधर तक हुआ बताओ फर्स्ट
रिटर्न सर। डन? यस सर। सो अगेन आई मेंशन एवरीवन, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये क्या है? ये थियरी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिटेंशन डन, कॉन्फिडेंशियलिटी डन, असेंबलिंग डन। नाउ वी विल डू ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द ब्रेक। अभी ब्रेक लेंगे, आफ्टर द ब्रेक विल कम बैक एंड वी विल डू दिस। सो इट्स 10:35, एवरीवन बी बैक बाय 10:50। ब्रेक। बैक एवरीवन। यस और नो बताओ। प्लीज कंफर्म एवरीवन बैक और नॉट। यस सर। Yes, chalo then everyone. So confidentiality and safe custody of the working paper. Can I say इसको safe कैसे रखेंगे? If the hard copies are there, इसको ड्रॉयर में रख दो और लॉक कर दो, ये सब ताला दे दो, सिंपल। यस सर, इफ दीज आर इलेक्ट्रॉनिक देन व्हाट विल यू डू? सर पासवर्ड क्रिएट करेंगे सो दैट नो वन कैन एक्सेस इट, सिंपल। यस सर। देन यू नो व्हाट डिड वी डू? रिटेंशन ऑफ द वर्किंग पेपर्स और द डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर ऑडिट डॉक्यूमेंट यू हैव डन और यू हैव स्टोर्ड एक्सेट्रा। जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, कितने साल तक रखोगे आप? IASB is saying for 5 years, but more than 5 years. But ACCA is saying what? 7 years. And tax file should be for how many years, everyone? 7 years. Yes, sir. Sir, ये भी हो गया. Then we have done assembling of final audit report that we have to assemble each and everything within 60 days. Once audit report is given, audit report दे दिया मैंने, 60 days के अंदर सारा कुछ compile करना. Yes, sir. And this is an administrative process, everyone. This is not an audit procedure which is performed. Yes, sir. This is not an audit procedure which is performed. Yes. Now, everyone. Legal retention, this is also done. Now coming to this one, everyone, ownership. Now ownership किसके पास होता है? The audit documentation ownership किसका होता है इस पर? When coming to the ownership of working papers, or you say working papers. Yes sir, working papers. ओनरशिप किसके पास होता है? कैन आई से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होम? ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. दिस बिलोंग्स टू द ऑडिटर. यस सर. Not part of what? Not part of client's accounting record. It is not part of the client's accounting record. या accounting record के अलावा है. सर ये जो है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की सर. सर will this be included in the client's accounting records? No, 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 no. Yes, sir. Sir, this is with the auditor. ये auditor will have the ownership on this. Sir, will this be given to the client? Sir, will this be given to the client? क्या लगता है आप लोगों को? ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरा किए, जो वर्किंग पेपर्स है, ऑडिटर विल गिव टू द क्लाइंट और टू समवन एल्स? What do you think, everyone? Will auditor give this to Modi ji whenever they want? No. Yes, everyone will be given to others. By what, everyone? It will be given to others when? When there is a consent. When there is what? When there is the consent of what, sir? Client's consent. क्लाइंट का कंसेंट है, क्लाइंट ने बोला कि दे दो, कोई इशू नहीं.
or required by law. If it is required by law, then the auditor have to give everyone. The auditor can't say no. Law or regulation. Law or regulation, yes, sir. Ownership will belong to the auditor, sir. Auditor ke paas hoga, sir. It is not part of the client's record. Sir, will this be given to other parties? Yes, this can be given if the consent is taken from the client. Client ne bola de do to mere ko bhi koi dikkat nahi, simple. Or if the government is saying that you have to give, then there is no such choice, everyone. आपको देना ही पड़ेगा. There is no such choice, everyone. Yes, sir. There is no such choice. It have to be given. Yes, sir. Simple. Sir, can the auditor give to the sir? Can the auditor give this working papers to the client? क्या लगता है आपको? Will the auditor give this to the client? Client cannot demand. Can't demand. Client will not be able to demand, yes, sir. But if the auditor wants, the auditor can give. If auditor may choose, ऐसे लिखो, auditor may choose to provide it to the client. To the client. To the client. That is certain working papers. Certain working papers will be given to whom? To the client. Sir, will this be original documents? No, no, no. ये copies होगा. It will be a copy, everyone. The original will not be given, everyone. When, sir, if auditor feels it is appropriate, it's appropriate, then only they will give everyone. Yes. देखो सब लोग. It's the document of auditor. Auditor can give to the client. Yes. When will the auditor give to the client? When he feels that, okay, it is appropriate to give, and he will not give the original document. He will give the copies. वो Xerox करके दे देगा. किसको? Client को. Yes, sir. But client does not have the right to what? Obtain those. Client के पास right नहीं कि वो ले सकता है. अगर auditor का मन होगा तो auditor देगा. Yes, sir. Auditor का मन होगा तो auditor क्या करेगा? Auditor will give. Yes, sir. Yes. Why not part of the accounting record? It is totally different, na? Accounting records are totally different. Accounting is done by whom? Accounting कौन करता? Accounting is done by whom? By the management. Audit is done by whom? Auditor, na? Auditor will keep the documents with him safely because उसको चाहिए. Why will he give to the management? Auditor is appointed by whom? By the shareholder. Shareholder will say that do the audit and go. Whatever audit they have done, can I say, will they give to this one? The client? No, and it will not be part of the accounting records. Accounting alag hai, auditing is alag totally. You can't say that the balance sheet will contain the financial statements will contain an audit report. Can you say that? No, there are financial statements which are fixed. This will not be part of the this one. Accounting records. Accounting records are totally different. Okay, Nisa, clear? Yearly documents in one place and to check in future if needed. Yes. They keep so that when they come for the next year audit, they can take the reference. Okay, they need not again ask the client. I mentioned at one point, what is the purpose of this? Purpose kya tha? What was the purpose of the audit documentation? Record of matters of continuing significance for future audit. This will help them for the future audit, as well as the audit documentation which is done, they will have with them. So that if a other person is coming to inspect whether you have done your work or not properly as an auditor, will help them to check it. If I give to management, management will do some misbehavior with those documentation and it will create a problem on me. If I give the documents to them, they will miss out the document and it will create a problem, because if some other third party is coming to check whether I have done my work properly or not, it will create a problem. Understood?
Yes. If they change auditor, we can still ask about the reports from the old company. Yes. But with the consent of the client. Client's consent is very important. See, sometimes what will happen, regulations, laws, and in each country, the law will be different. But most of the time, what will happen, let's say a new auditor is coming, the old auditor has done the work. So can the new auditor connect with the old auditor and ask something? Yes, he can ask. Remember ISA 210. ISA 210. Before accepting the engagement, I will call to the old auditor and take a confirmation. When can I call? When I have the consent of the client. Okay. Clear? सबको समझ में आए? Yes, sir. Chalo, sir. So everyone, we have completed these small topics which are very, very important for the MCQ. Yes, sir. Now, everyone, let us come to the notes. If you see the notes, everyone, अपन ने क्या क्या कर लिया? This is done. Yes, sir. Now 220 अपन ने नहीं किया है. 230, everyone. ISA 230. Audit documentation, we have done the definition, we have seen the example. Then objective of the auditor also we have done, sir. Purpose and what is the importance also we have seen the points, yes, sir. Then form, content, extent, yes, sir. These three things we have seen, yes, sir. Then factors affecting size, nature, identified risk, significance, nature, etc. Each this is done, yes, sir. Then timely preparation, we have to prepare this on time because it is more accurate. If you prepare today, the accuracy level will be more, yes, sir. Then everyone अपन ने क्या किया? Then we have done the content of the audit documents of working paper. Yes, sir. Then we have done what? Assembling of the audit report that you have to assemble within 60 days. It is an administrative process, not an audit procedure. Yes, sir. Then everyone, confidentiality and safe custody we have done. कैसे safe रख सकते हैं इसको? Then retention, that is not less than 5 years, but ACCA is saying 7 years. Yes, sir. Then ownership will belong to the auditor and it is confidential and it can be given if there is a requirement by the law or the client's consent. Yes, sir. And the ownership will be mentioned in the engagement letter. If on the day one, the client is saying that iska ownership mere ko jayega, if the ownership will be going to me, then the ownership will belong to the client. If on the day one the auditor has mentioned that the ownership of these audit documentation will belong to me, then it will be to the auditor. Yes, sir. Now this is done, everyone. Yes, sir. ये भी हो गया. Now, everyone, we have to understand this part, everyone. Permanent audit file and current audit file, everyone. Permanent audit file and current audit file. Now, what does this permanent audit file and current audit file means and type of format? We have to understand. There are two formats to prepare the audit documentation. दो formats है. एक तो manually करो आप, या तो the other one is what? A standardized one, a automated one through, let's say, through any audit software. Yes, sir. Now, अगर आप once you start working, everyone, when you go to EY, when you go to KPMG, they have their own softwares, auditing softwares. That only you have to use and you have to do the audit. Yes, sir. Or the normal one is what? The normal basic format which is available in the small firms. Yes, sir. So, chalo, let us understand this permanent audit file and current audit file. Everyone, see now. Everyone, please read it. We'll write down the key difference later on. See now. For recurring audits, everyone, याद आ रहा recurring audits किया था कि नहीं? Sir, current year audit, last year audit I have done. In the current year also I am doing audit. So for recurring audit, everyone, when the audit is done more than 2 times, 3 times, I am doing the audit of the same company for the multiple years. What will I do? अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ एक क्लाइंट का, पिछले साल भी किया, ये साल भी कर रहा हूँ, अगले साल भी करूंगा, in that case, everyone, I divide the audit file into two separate parts. In one part, I will keep the permanent audit file. In permanent audit file, what will I do? I will keep the documents which will be same for the coming years. Like a company has purchased a property. If the company has purchased the property, how can I confirm it? Property papers, I'll take the property papers as a confirmation. Now, will I ask every year the property papers? This year audit I've done. Okay, मेरे पास property papers. Next year when I do the audit, will I again take the property papers from the client? अरे नहीं पापा. I will say, okay, this property belongs to the company. Okay, once I've taken that document, I will keep with me only because this will help in the next year also. So in permanent audit file, what is done, everyone? This contains the information which are of permanent nature. Like legal documentation, memorandum and article of association, when a company was created, everyone, engagement letter, all these are what of permanent nature.
article of association, memorandum, article of association, what it is written, each and everything about the company's detail, the governance, each and everything which is same, हर साल वो same ही होता है. So which is of a permanent nature will be stored in this audit file. दो तरह के फाइल है, basket A, basket B. In basket A, whatever is of permanent nature, I'll keep it because I need not ask again and again every year. Yes, sir. Sir, इसको कब update करेंगे? When we will update the basket number 1, when there are changes in the permanent information. If there are any changes in the permanent information, we will change. Yes, sir. But when coming to current audit file, everyone, current audit file, every year when you do the audit, there are information which are not of the permanent nature. Yes, sir. That is, see everyone, financial statements, review notes, management letter, written representation, all these are different. Every year the balance sheet and P&L will be different. अरे पिछले साल का बैलेंस शीट और P&L को ऑडिट किया तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा है. In the current year, the balance sheet and P&L is totally different. Whatever the management has given us, that is different. Whatever notes I have made down, when I was doing the audit, I have made some notes. Okay, these are the issues in the company. That is separate because every year it will be different. Yes, sir. That is stored in this one. Is this clear to everyone? इससे MCQs आते हैं. From this MCQs are tested, everyone. Permanent audit file and current audit file. And this is only prepared for what? कौन से audit के लिए? This is prepared only for recurring audits, everyone. It is only prepared for what? Recurring audits. Yes, sir. This is based on what, sir? This is based on historic information. So this is based on what? Current information. Permanent audit file, historic, yeah, current, yes, sir. Here it is of permanent nature. Here it changes, yes, sir. Historic information, current information. Here you will update what? Only when there is a change in this permanent information. Here, every year changes that. So every year you have to maintain separately, yes, sir. You have to maintain it separately. So see now key points. There is normally one permanent audit file for a client. A separate current audit file is maintained for each audit period, interim, year-end, and final audit. Yes, sir. Then standard indexing system may be used for both PF and CF to organize and allocate audit documentation. That means they are saying a system where we can allocate each and everything and maintain it properly. We can maintain a system is that. How should we maintain? कैसे maintain करना? Through electronic form, through manual form, how? System is that we have to follow that. Yes. I hope this is clear to everyone. Permanent audit file and current audit file. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. Just remember permanent, which are of permanent nature. Current, every year the information is changing, so we have to document it separately and have to keep it separately. Yes, sir. Only when recurring audit is done. Yes. Now see everyone the next one. The types of format. The types of format of the working paper. Types of format of the working paper. Yes, sir. Types of format of what's a working paper. So see now everyone, there are two types of what everyone formats everyone. पहला वाला कौन सा है? Standardized working paper. And the next one is what? Automated. Automated का meaning क्या है? Everything is automated. आपको खाली data input करना है. Everything will be done automatically. Everything will be done what everyone? Automatically. Yes, sir. सर अभी डिफरेंस क्या है इन दोनों में सर? सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है. एवरीवन स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग पेपर, लाइक अ फॉर्मेट इज फिक्स्ड एवरीवन. जैसे सर व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑडिट, देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट. सेक्शन ए सेक्शन बी हमको फॉलो करना पड़ेगा. टू प्रिपेयर दी वर्किंग पेपर्स आल्सो एवरीवन, देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट. इट इज व्हाट? प्री डिजाइन. पहले ही उसको डिजाइन कर दिया है. It is a pre-designed audit document used to perform and document audit work. ये pre-designed है कि आपको फॉर्मेट इसमें बनाना है ऐसे. Yes sir. So example checklist. You have a list. Okay, ये कर लिया, ये कर लिया. You tick it. It's like a checklist. You make a checklist. This is what? A pre-designed working paper. It is what? A pre-designed. Then questionnaires. Questionnaires means a list of the questions which you will be asking to the client. When you go for audit, अगर मैं audit के लिए आऊंगा तो there is a list of questions which you'll be asking. Now, every attempt, when let's say for FR or audit, I give the list of the question which you should do. That is what everyone, it is a standardized format. Then specimen letters, the format of the letter is also fixed. Yes, sir. So why, what is the advantage of this, sir? इसका advantage क्या है? What is the advantage, everyone? Improves audit efficiency and consistency. If the format is standardized, if everything is fixed, everyone, what is the benefit? Benefit क्या है? कि sir, it will improve efficiency and consistency.
Then ensure uniform approach to audit. It is uniform. Everything is in sequence. Everything is same. So previous year also same. This year also same. It will be easy for me. There are not 1,000 formats which I have to follow. There is one basic format which I have to follow for all the clients, so that it becomes easy for me also. नहीं तो क्या कि बार बार चेंज होगा तो बार बार मेरे को भी कंफ्यूजन होगा. Then may encourage auditors to mechanically follow procedures without sufficient professional judgment. If everything is standardized, everything is fixed, ये करना है, that means there will be no need to make professional judgment. The judgment level will be less. This is about standardized working paper. Yes, sir. Then coming to what everyone? Automated. In automated, see everyone. Electronic system or software used to prepare, store, and review audit documentation. Everything is in the form of electronic. Yes, sir. That is electronic audit files, audit software package. There are a lot of software packages, everyone. Because when you go to this one, everyone, practical one में जब आप audit करोगे ना, you can't sit and select the sample by yourself, everyone. Reliance company का आप बैठ के select करोगे क्या sample नहीं? You'll copy paste the data in the auditing software. Automatically it will select the samples and give you. Yes, sir. What is the benefit? It will reduce errors, sir. Error reduce होगा because it is done with the help of systems and improve efficiency. Produce neat and easy to review working paper. Can I say the once everything is done in the electronic form, it will be neat and it is easy to review. एक ही फॉर्मेट में होगा, इजी होगा, फटाफट. ये सर. बट हियर चांसेस आर दैट कि एरर हो सकता है. चेकलिस्ट जैसे आपने टिक ही नहीं किया, भूल गए टिक करना, और यू हैव डन सम एरर, दैट कुड बी हियर. It saves times and facilitates the management of audit documentation. It will save time. These are the advantages of standardized and automated. Automated errors are less. Error का chances हो सकता है sir. Easy to review. Time saving. Here judgments will be made less. But a uniform approach is there, which is better. Everyone understood the two types of format to prepare the working papers. होगा सर. Yes, सबको clear? Yes, sir. So this also is done. So what all we have done? सर रेकरिंग ऑडिट में परमानेंट ऑडिट फाइल होता है, करंट ऑडिट फाइल, क्योंकि बार बार है ना, हर साल है ना, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट, अरे बार बार क्यों करना, एक में स्टोर करके रख लेते. यस सर, सिंपल. यस सर. सर दिस इज डन. कंटेंट इज ऑल्सो डन. यस सर. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट एवरीवन. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके इसमें लिखा हुआ क्या बोले, in your study of everyone, just we'll have a reading and just understand. Yes sir. So देखो everyone now, documentation of significant matters and related significant professional judgment. सर जब हम documentation करते हैं, sir when we document each and everything which you have done in audit, sir there are some areas where the significant judgment is done. So significant professional judgment is taken, or there are significant matters which are very which creates a high risk. तो इनको क्या, इनको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. ये सर सीन. ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड रिलेटेड प्रोफेशनल जजमेंट मेड बाय द ऑडिटर शुड बी डॉक्यूमेंटेड. अगर हमने कुछ प्रोफेशनल जजमेंट लिया है और देयर आर हाई रिस्क एरियाज, दैट आल्सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली. Examples of significant matters, see now, result of audit process indicating financial statement being materially misstated. Material misstatement is high. Then it is very difficult for us to apply the audit procedure. Sir, audit procedure apply नहीं कर पा रहे हम. We are not able to check anything, sir. Check नहीं कर पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा सर, क्या करें. Then going concern, sir, there is an issue regarding going concern, whether the business will continue or not. Whether the business will continue or not. And when the assessment of risk and planned audit procedure. सर हमने सोचा कि रिस्क इतना ही है, बट जैसे जैसे ऑडिट कर रहे मालूम पड़ रहा कि ये कंपनी में तो गोलमाल बहुत ज्यादा हुआ है. सर आई डिसाइडेड दैट द रिस्क इज लेस ओनली,
But as I'm doing audit, as I'm checking each and everything, I get to know that the risk of the company is very high. So each and everything should be documented, everyone. Sir, what about these three things? KMP, all this is part of your reporting, everyone. उसको भी आपको क्या करना है? Document करना. Whatever you do from the day one till the end, जब तक आप report बनाओगे, सबको document करना. आपने कैसे audit किया, each and everything you have to document. You have to maintain the evidence also separately. If there are significant matters, उनको भी अलग से करना है बाबा. You have to maintain those separately. Yes, sir. Clear, everyone? Yes, sir. So significant matters also should be documented. So significant matters means what? So today I thought that the company is doing good. Risk कम है कि सर सब ठीक ठाक है. But जैसे जैसे ऑडिट कर रहा हूँ मालूम पड़ रहा है कि सर ये कंपनी में तो गोलमाल बहुत हुआ है. So my risk is increasing. There are risk of material misstatement is more. Sir, going concern issue is that the company will not be able to do the business. So I'm not able to apply the audit procedures. I'm facing difficulty. All these are the problems, yes, sir. Where judgment is involved and material misstatements are high. Yes. Clear हुआ है? This also we have to document, simple, nothing. High areas which are there, उनको भी document करना है. Simple. देखो everyone. So with this everyone, this AISA is done everyone. सबको समझ में आया ये? You have to revise. You have to revise. Then only it will become easy. हुआ क्लियर? बताओ हर्ष, नशा, सबको? Yes, sir. यस. यस सर. सर 230 कंप्लीट हो गया. क्या बेटे? सर 230 कंप्लीट हो गया फिर. 230 आइजा. हाँ 230 हो गए खत्म बेटे. कुछ नहीं था. क्या था इसमें? नथिंग एवरीवन. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तीन जो क्वेश्चन बताए थे एंड दी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर थियरी एमसीक्यूज एवरीवन. जो सेक्शन ये थियरी आता है ना एमसीक्यू, yes sir, for that it is important. So everyone again what all we have seen, sir audit documentation का मीनिंग क्या है? सर सब चीज को डॉक्यूमेंट करना. क्या डॉक्यूमेंट करना? जैसे भी आप ऑडिट कर रहे हो, क्या क्या कलेक्ट कर रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट. यस सर. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज व्हाट? टू प्रिपेयर टू व्हाट? sufficient and appropriate record. On that basis only they have given what the audit report and evidence that the audit was planned and performed in accordance with AISA. Then purpose क्या था sir? The first two same objective. Then the engagement team, it will assist the engagement team to plan and perform the audit. It helps the team members to direct, supervise, and review the audit work. Then audit team will be accountable for its work. If everything is documented, they are accountable. Okay, उनके पास responsibility कि उन्होंने काम किया है, बराबर से किया कि नहीं, बाद में check करेंगे. Yes sir. Then retain a record for the matters of the continuing significance. Sir, we will maintain this because every year this will be helpful to us. Yes sir. Then it is also helpful when there is an external quality inspection. If the board of directors or the management or the shareholders are saying कि some हमको auditor पर भी doubt है, तो हम क्या करेंगे? We will send a third party to inspect whether everything is done properly or not. In that case, the document which I've done will help them to check, okay, इसने अच्छे से काम किया. Yes sir. Then form extent, not so important, but you have to remember that each and everything is mentioned. Yes sir. Then content important. Name of the client, year end, subject matter, name of the preparer and the date of the preparer, name of the reviewer and the date of review, working paper reference if you have taken any reference, then result of what? The audit work, audit test, and the audit procedure, and the final conclusion. Yes sir. Then factors affecting, factors कौन से affect करेंगे audit documentation? Sir audit documentation ज्यादा होगा कि कम होगा? Depends on the size and the complexity of the business. Nature of the audit procedure. Sir ज्यादा procedure हमने perform किया, बार बार check कर रहे, multiple angles से check कर रहे, तो your audit documentation will be more. Sir material misstatement is more, audit documentation will be more. Sir significance of auditors, audit evidence. Sir बहुत सारा audit evidence है, audit evidence ज्यादा है तो documentation भी ज्यादा बनेगा. Yes sir. Then nature and extent of the exception identified. If there is anything which you have identified where you have doubt, error हो रहा है, तो आप audit ज्यादा करोगे तो documentation will be more. Audit methodology and tool used. If you're using
different methodologies, in that case, and different tools, the documentation will be totally different because each and every audit software will be different. Yes, sir. Sir, audit ko documentation should be done on timely basis, because if it is done on timely basis, it will be more accurate. If not, no. Assembling of audit files, sir, this should be assembled within how many days, everyone? Sir, 60 days में इसको assemble करना है. From what date? Audit report date. Yes, sir. Then confidential and safe, sir. This should be kept confidential. Yes, sir. How, sir? अगर hard copy है तो locker में रख दो. If it is electronic, keep some password, something. Then retention of the working paper. So for how many years we have to retain? IASB saying for more than 5 years, but ACCA is 7 years, and tax files also should be maintained for 7 years. Then ownership. So ownership किसका होता है? Ownership mainly belongs to the auditor. But on the day one, when we have made the engagement letter, in that we have mentioned कि अरे नहीं, auditor का नहीं है, ये client का है, तो it will be for the client. And will be given to the client. अरे नहीं बाबा. Can client request? No. Can be given to the client. That depends upon the auditor, and a copy will be given, not the original document. Yes, sir. Yes, sir. Then permanent audit, this one, and current audit file we have done. Then types of format we have done. Yes, sir. हुआ clear? बताओ मुझे. यस सर. Yes. अब इसके एमसीक्यूज करते हैं. चलो देखते हैं एमसीक्यू का लेवल कैसे है. ठीक है एवरीवन, एमसीक्यू का लेवल कैसे है आपके स्टडी हब से. ओके चलो आ जाओ. I hope you have done the from the first chapter, everyone. Did you do the first chapters, this one or not, everyone? आप लोगों ने किया कि नहीं फर्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज फ्रॉम योर स्टडी हब? सर वो कहाँ से करने हैं? स्टडी हब से बेटे. तुम लोगों सर ने आप ही रिवाइज. भेज दो कोई पीडीएफ पूरी. अरे पीडीएफ नहीं है ना बेटे इसका, इसमें इतने एमसीक्यू नहीं. चलो एवरीवन, डिड यू रिवाइज और नॉट? बताओ मैं. रिवाइज तो सर की है. रिवाइज. व्हाट अबाउट अदर्स? बताओ बताओ बताओ, किया कि नहीं रिवीजन तुम लोगों ने? नसराई सिंह, यस. सिंह सर, सिंह साहब, किया कि नहीं रिवीजन? सिंह साहब आज क्वाइट है. मेरे को ये आवाज नहीं सुनाई दे रही कि आप लोगों को भी नहीं सुनाई दे रही उसकी? नहीं सर, नहीं सुनाई दे. नहीं सुनाई दे रही ना? चलो आ जाओ, आते हैं. क्या दिक्कत बता पाएगी? हाँ चलो आ गए सब लोग. सो एवरीवन, व्हेन यू सी योर स्टडी अपना, इन टोटल 30 चैप्टर्स है. 30 चैप्टर कुछ नहीं बेटे. देखो फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर डायरेक्ट, वो ओपन करेंगे. चैप्टर 5 डन, चैप्टर 6 डन. कल चैप्टर 7, 8 और 10. अभी ये जो भी है ना सारा कुछ सिस्टम ऑफ इंटरनल, दिस एवरीथिंग इज अबाउट योर दिस वन ओनली 300 सीरीज है सर. सो इफ यू सी ना, देन एक्सटर्नल ऑडिट 2-3 पेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो 2 or 3 पेजेस, एथिक्स ऑल्सो 2 to 3 पेजेस का डायरेक्ट है वो. कर लेंगे तो आपके 10 चैप्टर्स हो जाएंगे. आई थिंक कि बाय द एंड ऑफ जुलाई 10 आपके 10 चैप्टर हो जाएंगे और रिस्क भी हो जाएगा. तो नाउ लेट अस डू फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर 1 द क्विजेस. आई होप सब लोगों ने रिवाइज किया है तुम लोगों ने.
So everyone please see this and say me what will be the answer for this one. इसका आंसर क्या होगा? रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा। आंसर बताओ क्या होगा इसका अभी। डी ऑप्शन। Based on a review, nothing has come to our attention that causes us to believe that accompanying financial statement do not present fairly in all material. कौन सा था ये? पॉजिटिव अश्योरेंस था कि नेगेटिव था? Others see me. What was this? नेगेटिव इंश्योरेंस। नेगेटिव अश्योरेंस। तो पक्का आंसर लॉक किया जाए आप लोगों का? डिफरेंस अपन ने लिखा था ना? हाँ जी सर। लिखा था बी है, सब लोग यही बोल रहे हो? चलो कंफर्म। नेक्स्ट या the level of assurance given by assurance engagement will depend on the type of engagement. Assurance levels are often described as being either absolute, reasonable, limited, zero. What level of assurance would normally be given to an audit of financial statement and what level of assurance? तो audit के related बोलना आपको, audit के related. For audit, what will be the answer everyone? रीजनेबल। Audit के लिए reasonable देते हैं ना? यस। Yes or no everyone? तो रिव्यू के लिए कौन सा दोगे तुम? 2 and 3 ऑप्शन। लिमिटेड। ऑप्शन सर लास्ट। ये ऐसा क्यों आ रहा है ऑप्शन इसमें? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज द रीजन? आई डोंट नो दैट कुड बी सम ग्लिच। डी आना चाहिए ना उधर, वैसे लिखा रहा है। डी आना चाहिए ना ऑप्शन। चलो अपन टिक करते, ठीक है। यस सर। देन यस। which of the following best describe professional skepticism? अरे प्रोफेशनल skepticism याद करो। skepticism क्वेश्चन माइंडिंग। व्हाट विल बी द आंसर? सी है डी सर। ऑप्शन। सी 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 सी। सी ऑप्शन सी। यस सर। देन फोर्थ वन, who is ultimately responsible for ensuring that annual financial statement of listed companies are prepared? अरे किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैलेंस शीट पीएनएल बना है? बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिटर नहीं सर। कंपनी सेक्रेटरी नहीं सर। सर हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस सर। बोर्ड कंफर्म। ऑफ डायरेक्टर्स सर। देन सी द लास्ट वन एवरीवन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्यों ऑडिट करते? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अरे खाली माइनॉरिटी का सोचेंगे क्या? डी सबका ऑप्शन। सोचना पड़े। टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटी। अरे सर फ्रॉड का किधर है? हमारा काम चेक करके जाना है। मेरा काम फ्रॉड का डिटेक्ट करना नहीं है। देन to assess the effectiveness of the company's performance to provide assurance. Yes sir, to provide assurance. Yes sir, भी है। चलो आंसर कितने करेक्ट आए तुम लोगों के? अगर तुम लोग 60। 60 आया। नाउ लेट अस रिव्यू एवरीवन। चलेगा? होता है। सी एवरीवन नाउ। सी एवरीवन नाउ। सर मैंने पहले का डी बोला था। डी बोला था, बाद में तूने नेगेटिव डी बी बोला ना, मैं क्या करूं? नहीं सर, मैंने डी ही बोला। डी बोला था। डी बोला। ओके। सी एवरीवन व्हाट वाज द मिस्टेक? हाँ ये मिस्टेक हुआ है सबसे। Why? This is a learning now. क्या था everyone? When we read everyone, can I say it was a limited level of assurance and it was expressed negatively or not? Was it a negative assurance? It is a limited level of assurance. Yes or no? इसका आंसर यस सर। छोटा मिस्टेक था। अरे आंसर आपको आता था बट दिक्कत क्या था? What was the mistake everyone? सर दो फर्स्ट टू पढ़ लिए कि सर ये तो नेगेटिव अश्योरेंस है सर। यस और नो? दैट इज ओके बट अभी एग्जाम में मत करना है, ठीक है? इन एग्जाम इफ कम्स डू नॉट डू दैट। यस सर। यस। देखो इसका नेक्स्ट कैसे जाए। नेक्स्ट सी एवरीवन। देखो इसका तो डी था ना, अपन ने डी तो बोला था। यस और नो यस एवरीवन? सर। बट देयर वाज अ ग्लिच। यस सर। ओके यस और नो? ग्लिच था ना? अरे तुम लोगों का आंसर डी तो था। यस यस सर। सर। यस ना? डी तो था आंसर। यस सर। बट वो क्या था? देयर वाज अ आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन। यस सर। बाकी तीनों तो करेक्ट ही। नेक्स्ट वाला देखो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सर। सो आ जाते वापस चैप्टर्स पर। यस सर। 5 एमसीक्यूज और इधर।
Okay. This one everyone. Okay, thode you'll not be able to do these questions now because these are little bit interrelated. ये केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है एवरीवन. एवरीवन, दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन. ये क्या है? केस स्टडी वाला क्वेश्चन है. चलो पढ़ते हैं एवरीवन. प्लीज रीड इट एवरीवन. पढ़ो आप लोग. केस सिनेरियो क्वेश्चन है. ऐसा आएगा नहीं, बट जस्ट इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन पर्पस एवरीवन. क्यों कर रहे अपन लोग ये? फॉर रिवीजन पर्पस. रीड इट एवरीवन. आराम से पढ़ो. टाइम है आपके पास. पढ़ो. पहले पूरा ये पढ़ो ऊपर वाला. When you do these MCQs now everyone, you get a confidence कि जो आपने पढ़ा आपको याद है कि नहीं. Ultimately, that's important. पढ़ लिया तुम लोगों ने? थोड़ा बहुत ये लगेगा बिकॉज ऑडिट इज कनेक्टेड एवरीवेयर ना. मतलब पूरा जब आप ऑडिट सिलेबस कर पाओगे यू विल बी एबल टू डू केस सिनेरियो क्वेश्चन प्रॉपर्ली. बट लेट अस ट्राई. जितना अपन ने सीखा हो रहा है कि नहीं. सर पहले का बहुत आएगा. अरे ये पढ़ा कि नहीं ऊपर वाला? पहले ये बताओ. ये तो पढ़ लिया सर. ये पढ़ लिया. चलो मैं भी पढ़ता हूँ, समझता हूँ. It's 1st July 2000X5 everyone. You are an audit manager at D company and a medium-sized firm with several offices. So, मैं एक auditor हूँ. I am an audit manager at a company which has multiple offices. As part of your role, you are responsible for undertaking procedures relating to the acceptance of a new client. Okay, नया client मिल रहा है. You are currently involved in the acceptance of 4 new clients. आप नया client को accept कर रहे हो. Everyone, when you accept new clients, we had remember 10 points. याद आ रहा है कि नहीं? When you accept a new client, there were 10 points. You have to see whether you have expertise, etc. XYZ. Yes, sir. B company has invited D to perform a limited assurance review. Limited assurance review. अभी limited assurance review means what? Audit है क्या ये? Is this audit or review? This is what everyone. Sir, the first one they are only calling for us review, not for the auditor. D code does not provide any other services to the company. Yes, sir, they are not providing them. T company. The board of directors of T have set target key performance indicators to assess the company's performance for the year ended. Okay. The board has asked D company to perform an assessment of the performance to this and to prepare a report for the board as to whether the KPIs. Are they doing audit here? ये audit है क्या? For this company, are they doing audit? No. They have calculated some KPI. KPI का meaning क्या होता है? Some ratios they have calculated and they are asking whether these are proper or not. Then K, an existing audit client. Okay, it is already an existing client. ये already मेरा client है. Is considering to set up an internal audit department. उनका audit करना. Internally also, within the company also we have to do the audit. The directors are unsure whether to hire staff or to outsource the function. K has approached D to inquire as to whether it would provide internal audit services or not. Yes, sir. तो इंटरनल ऑडिट एवरीवन अभी तक अपन ये टॉपिक नहीं किया. सो हियर एंड देयर सम डाइसीनेस कुड बी देयर. इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिट का मीनिंग क्या होता है एवरीवन? एक्सटर्नल ऑडिट मींस यू रिव्यू द बैलेंस शीट एंड पी&एल. इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्या है? इन इंटरनली विद इन द कंपनी एवरीथिंग इज गुड और बैड. वेदर जो सिस्टम्स बने हैं,
एवरीथिंग जो भी कंपनी में सिस्टम्स बने हुए, जो प्रोसेस है वो बराबर है कि नहीं, वो चेक करना क्या है, इंटरनल ऑडिटर का काम है। सब प्रोसेस जैसे लेट्स से एवरीवन, आई वांट टू परचेज आईफोन, आई एम द सीईओ, आई वांट टू परचेज द आईफोन। अगर मेरे को आईफोन परचेज करना है फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी, will I directly be able to take the money and go and purchase? No, there is a level. I have to take permission. Then there is something known as finance department. उसका भी permission लेना पड़ेगा सर. Then L company has recently accepted a new client L. The previous auditor C resigned from the audit in May. D company was appointed on 4th June. L is in the early stage of legal action against C for failing to detect a fraud. Yes. तो क्या बोल रहे वो? D was appointed and legal action was against C company, जो पुराना ऑडिटर था। Yes sir. So see now, an assurance engagement can provide limited assurance or reasonable assurance. Indicate by clicking on the relevant box in the table below whether each of the following statement is true of limited assurance reasonable. An audit is an example of what everyone? Audit किसका example है? Everyone, audit किसका example है? Reasonable. Reasonable, yes sir. It provides a lower level of assurance. Lower level of assurance कौन provide करता है? Lower level of assurance is given by limited assurance or reasonable assurance? Limited. Limited, sir. Limited. Then judgment is required to determine the appropriate procedure required to obtain this level of, or you have to obtain what? Judgment is required to obtain appropriate audit procedures. Audit procedures mein, when you want to do audit procedure, everyone, you apply judgment. Can I say judgment? Do you apply in limited, reasonable, or in both? Both. दोनों में Both. अप्लाई करते हैं ना, जजमेंट तो दोनों में अप्लाई होता है ना बेटे। यस सर। देन और नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म Limited. किसमें देते हैं? नेगेटिव फॉर्म किसमें देते हैं? Limited. यस सर, कंफर्म। ओके, योर आंसर इज राइट एवरीवन। देखो सब ग्रीन आया, आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट। Then which two of the following tests would the company carry out as part of the limited assurance review? Okay, they are saying which two of the following tests would be carried out as part of limited assurance. Now everyone remember, मैंने क्लास में क्या बोला था? Limited assurance means what everyone? Limited assurance means doing a lot of testing or doing less testing. Less testing. Less, yes sir. Now when coming to less testing, everyone remember, मैंने क्या बोला? Less testing is done how by? With the help of analytical procedures and with the help of what? Enquiries. Yes or no? Enquiry करते management के साथ and analytical procedure. Yes sir. To carry out B company. Okay, B company का बोल रहा हूँ. Enquiry of management. Perform analytical procedure. Perform test of control. Perform extensive. Option B Extensive and होगा C. क्या? Extensive will be the answer. Will you do extensive here in limited assurance? No, sir. अरे सर ये तो है ही नहीं सर, डी तो आंसर होता ही नहीं है सर। देन व्हाट कुड बी द आंसर? विल यू B and टेस्ट C. एवरीवन, विल यू टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग? अरे अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मींस व्हाट? यू विल गो इन डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मींस व्हाट एवरीवन? इट इज इन डिटेल। विल यू डू इन डिटेल हियर? नो, एज आई मेंशन इंक्वायरी एंड व्हाट? यस सर। इंक्वायरी एंड परफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर डन एवरीवन। कौन सा करेंगे? एक तो इंक्वायरी करेंगे और क्या करेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे सब लोग। टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बहुत डिटेल हो जाता बेटे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का याद करो, मैंने क्या बोला था? अगर मैंने पैसे ड्रॉयर में रखे, इसको मैं कैसे टेस्ट करूंगा? आई विल यूज सम अदर की टू टेस्ट, or I will check whether that is a lock or not. That is what detail one. It's a detailed testing, so that will not be done. Yes sir. देखा सब लोगों ने आंसर? Yes sir. Continue now. Next one. IAASB framework for assurance engagement requires certain elements to be present in every assurance engagement. Okay, कितने what are the 5 elements everyone? 3-party relationship, subject matter और क्या था? Report. 3-party relationship, subject matter, then suitable criteria, then sufficient Report. and appropriate audit evidence, then written assurance report. Yes sir. अब इसमें which of the elements required by framework is not present in respect of the proposed? Not present. 3-party होना चाहिए कि नहीं, आप लोग ही बताओ। Yes, sir. वो तो होगा। What are they saying? Which of the elements required by is not presented? Is not presented बोल रहे, तो what will be your answer? C option.
ए तो होना चाहिए, देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर सर, दिस आल्सो शुड बी देयर, देयर which of the elements required by the framework is not presented in respect of the proposed engagement for T company. Okay, T company के point of view से देखना है everyone. Now everyone in T company, are we doing audit or are we doing this one everyone? Review. अपन audit कर रहे कि review कर रहे? Here everyone, T company के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? Audit कर रहे हो कि review कर रहे हो? Everyone, आप KPIs को check कर रहे हो? You are doing the review everyone. आप review कर रहे हो? Yes sir. Review कर, आप audit नहीं कर रहे हो. So three party, there must be appropriate, there must be this one, a conclusion must be formed. What will you think everyone, which is not present in respect, which is not present बोल रहे, which is not present? Everyone, I can see here, KPI is there, yes sir. Then they have given the access also, performs the assessment also, to prepare a report also. So can I say subject matter is there everyone? Subject matter hai, subject matter is there, evidence is there, this is also there everyone. Subject matter is there, conclusion is there, and this is also there. Can I say this is not there everyone? Three-party relationship. Here there is no such requirement of three-party relationship everyone. Why sir? So why there is no three-party relationship everyone? Samjho. Here auditor is only responsible for what everyone? Auditor is only the see everyone. इधर user कौन है आप लोग बताओ? Everyone in the case number 2 user कौन है? अगर डायरेक्टर ने बोला है कि रिव्यू करके दो दैट वेदर द केपीआईज इज करेक्ट और नॉट, सो सर दिस कंपनी इज व्हाट? अ पार्टी. इधर यूजर कौन है? द यूजर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड हु इज गिविंग द दिस वन? हु इज गिविंग द केपीआईज? डायरेक्टर्स. सो कैन आई से देयर आर ओनली टू पार्टीज ना? एक तो द एंटिटी एंड द अदर वन इज हु? The board of directors. Board of directors are only the users. Here shareholders are not the users. ये तो review हुआ ना? ये तो review हुआ. Yes sir, Dharan. So A is the answer everyone. A is the answer. सबको समझ में आया ये point? बताओ मुझे. अरे KPIs कौन दे रहा है? The board of directors of T have set targets to assess the company's performance. So the client कौन हुआ? User कौन हुआ? Board of directors. And KPIs कौन दे रहा है? अरे board of directors ही दे रहे KPIs. So there is no three party, only two parties are there. Yes sir. Continue. Then everyone, identify by clicking on the relevant box in the table whether each of the statement relating to the possible provision of internal audit service of K by D is true or false. Everyone, please read this and say me. इसका आंसर क्या होगा? Internal audit department, ये K company का है. From this company point of view. I know थोड़ा tricky होगा everyone to do the case study question because this is related to other, related नहीं है, but here and there once you complete the entire audit syllabus that it becomes easy to do. But try करो, जो आता वो तो try करो. As you have understood the process of audit now. और फर्स्ट का फॉल्स. Yes. पहले का फॉल्स आएगा. Okay. Others. सेम ही, गलत हुआ तो कुछ इशू नहीं है बाबा, सीखना है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. डी कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही है? डी कंपनी इज ऑलरेडी डूइंग दी ऑडिट ऑफ दैट, एंड डी कंपनी इज डूइंग दी ऑडिट ऑफ के कंपनी.
के कंपनी सेइंग टू डी कंपनी कि आप इंटरनल कंट्रोल भी आप संभाल लो। इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी में जो कंट्रोल्स डले हुए हैं, जो आप चेक करते हो, वो भी आप ही करो ये टाइम। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? थोड़ा डाइसी है, आई नो, इट्स लिटिल बिट डाइसी, यस। So see everyone now, the risk of D company assuming management responsibility would reduce by using a separate team of staff who are not involved in the external audit. आप लोग ही बताओ, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग द इंटरनल कंट्रोल, विल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट रिड्यूस? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विल दैट रिड्यूस? नो बाबा, ये फॉल्स है। मैं इंटरनल कंट्रोल कर रहा हूं, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। यस सर। D company should consider whether C has appointed a responsible official to oversee internal audit activities. Yes, true. मैं check करूंगा whether there is a senior person or not who is reviewing each and everything internal control. Then the materiality of financial statement amount affected by the internal audit service should be considered when evaluating the significance of any self-review step. Now, sir, ये again everyone this relates to what? This relates to this one, ethics. अभी तक अपन ethics नहीं किया, but आप लोग ही बोलो, अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग द इंटरनल ऑडिट एज वेल एज आई एम डूइंग द एक्सटर्नल ऑडिट, तो कैन आई से देयर विल बी अ प्रॉब्लम? देयर विल बी अ प्रॉब्लम, सो आई हैव टू कंसीडर द सिग्निफिकेंस, द मटेरियलिटी। यस सर, ट्रू। ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। केस स्टडीज आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डू बिकॉज हियर एंड देयर once you understand the entire audit process it will become easy. Yes sir. I hope ये तुम कर सकते हो। This you'll be able to do. Fifth question you'll be able to do because we have done this. Inherent limitations. C company's lawyer argued that the firm failed to detect the fraud. C company's lawyer argued that, okay, C company कौन था? Previous auditor था. C company was the previous auditor. Resigned from the audit. Previous auditor resigned. Yes sir. Now I am the new auditor. Yes sir. But legal action is taken on what? The previous auditor because कुछ fraud हुआ था और उसने fraud identify नहीं किया था. उसे fraud identify नहीं किया था. C company lawyer argued that the firm failed to detect the fraud in L's financial statement due to inherent limitations in the audit. Inherent limitations in audit. And that it had, in fact, obtained sufficient and appropriate audit evidence to enable the detected material misstatement due to fraud and error. Now, everyone think, मैंने क्या बोला था क्लास में, that as a auditor, will auditor provide 100% confirmation? No, क्योंकि सर अगर मैनेजमेंट ने कुछ डेटा नहीं दिया तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे। सर द बैलेंस शीट एंड पीएनएल प्रिपेयर्ड एज पर आईएएस एंड आईएफआरएस, वेयर जजमेंट इज इन्वॉल्व्ड। सर इफ एनी फ्रॉड इज डन, टू पर्संस आर डूइंग द फ्रॉड और वो दो लोग फ्रॉड कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड, दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू गिव लिमिटेड assurance or absolute assurance. We give reasonable assurance. Which of the following would be an inherent limitation of audit? C company was auditing the company for the first time and the business was new to them. Okay, वो बोल रहे कि नया business था, that is the reason they were not able to identify the fraud. Okay, due to tight reporting guidelines or deadlines, C company had a limited amount of time to complete the audit. Okay, they are saying that the time was limited. ये नहीं था sir. Then C company had relied on the truth of the information given by them by the company staff. Okay, C company had used audit sampling. तो can I say inherent limitation क्या था? Why will you not be able to give a limited absolute assurance? Because we are using sampling technique. अरे बाबा, किया था कि नहीं? Yes. सर इसका सी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? C option. देखो, auditor uses sampling and testing technique. That is the reason what we say inherent limitations. Limitations of what? Auditing. Yes sir. Now क्या बेटा आप क्या बोल रहे, इसका आंसर सी क्यों नहीं होगा? यस सर। बट कैन आई से नियरेस्ट आंसर कौन सा है इसका? नियरेस्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट आंसर क्या है? ऑडिट सैम्पलिंग ना। देखो, सी, वाई सी इज नॉट द आंसर। सी कंपनी हैड रिलाइड ऑन द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन स्टाफ ने दिया वो कंसिडर किए।
अभी ऐसा नहीं बोला कि सी में की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, जो इंफॉर्मेशन दिया था वी बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज राइट. यस, as a auditor, if I come to audit everyone, whatever information I get, I believe what? I realize that the information is true. Then I consider doing the audit. But here, the basic limitation is what? Sampling, sir. Yes, sir. So done with this. I know थोड़ा ये था because as you move forward, everyone, पूरा ऑडिट का प्रोसेस समझ में आएगा ना, the case studies will become very very easy. That is the reason I mentioned do not do MCQs etc. because it becomes very difficult for you to do the questions. So chapter 1 के हो गए, chapter 2, 3, 4 are pending. Chapter 6 के करते हैं. चलो, today only we have done ना. Let me see how well you answer. Everyone see this standardized working paper. अभी just किया अपन ने. Which of the following is an advantage of standardized working paper? So D option. D option. Sir, C. C. Others. चलो पढ़ते. Some are saying D, some are saying C, etc. अभी जब स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर किया था, व्हाट डिड वी सी? स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर जब किया था, क्या था ये? प्री डिजाइन फॉर्मेट था कि नहीं? सर इट वाज अ प्री डिजाइन. यस सर. Yes, sir. Audit efficiency, consistency is improved. Uniform approach था, and can I say may encourage auditor to mechanically follow the procedure without sufficient professional judgment. Yes sir. Now चलो आ जाओ. Which of the following is an advantage of using standardized working paper? वो क्या बोल रहे हैं? Which of the following is this one? Ensure the completeness of the audit working paper by placing of the standard program on each section of the audit file. If you are following the standardized working paper, does it confirm that all the work is completed? नहीं बाबा. It does not mean कि पूरा complete हो जाएगा काम. ये तो नहीं आंसर. A is out of the box. Introduced a standard approach to conduct and documentation of the audit. हाँ सर, ये तो मीनिंग है. It is not an advantage. It introduced a standard approach to. Yes sir, it's a meaning. It's not an advantage. Then B गया. Enables junior staff to follow properly documented and designed procedure, thereby reducing the need for excessive supervision. Now आप लोग भी बोलो. Enables junior staff to follow properly documented and designed procedure, thereby reducing the need to excessive supervision. Now if your juniors are doing the work, everyone, अगर उनको बराबर फॉर्मेट पे दे दिया, does that mean you will not do supervision on that? हाँ, No, sir. सुपरविजन तो करना ही पड़ेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Supervision में then facilitates briefing, delegation, supervision, review and quality control of the audit work. Yes or no? बराबर से काम होगा कि नहीं? अरे मैंने Yes, sir. काम दिया. Let's say मैंने I have my, let's say I am making my audit book, everyone. I have given the content to one of my student, one of who has done the audit exam. I say कि okay मेरे notes बना के दे मेरे को अच्छे से. Now if he is doing that, everyone, can I say मेरे को supervision तो करना पड़ेगा ना, उसको कुछ doubt है etc. He is just given the exam now. हाँ, everything is properly documented and designed, thereby reducing the need of excessive supervision. नहीं, ये गलत है. Supervision तो करना पड़ेगा. But what was the advantage, everyone? The advantage was that it was in a proper format. Yes sir. D is the answer. चलो next one. Auditor's working paper, or you say documentation. Auditor's working paper are conventionally divided into the current file and audit file for both convenience and control. Which of the following is most likely to appear on a permanent audit file as opposed to the current audit file? Permanent audit file में क्या आएगा? Permanent audit file में क्या है? देखो, Engagement letter. checklist, questionnaire, specimen. Engagement letter. Ah, no, sorry, my bad. Here no, here. What are these? Engagement letter, which is fixed, memorandum, etc. ये सब fix है. Financial statement review, Yes, sir. representation, management letter, ये सब change होता है बार बार बाबा. So which one is this, everyone? What is the जी. answer?
Written Engagement representation. letter. Everyone, what's the answer? Can I say C, written? sir. Yes, written representation change hota hai, sir. Report to management change hota hai. Engagement letter is the answer. Yes, sir. Confirm. Then, for how long does the ACCA recommend that the audit work paper should be retained? अरे ACCA कितना साल बोलता है? 5 years. 5 years की 7 years. 5 ACCA years. 7 years. 7 years. 7, 7, 7. IASB board says for 5 years. Yes, sir. Then, which of the following is not true for the audit working paper? बताओ इसका आंसर क्या होगा तुम्हें? वर्किंग क्यों करते सर? ऑडिट पेपर सब क्यों रखते सर? काम इजी हो जाए सर, प्लानिंग बिकम्स इजी, सुपरविजन हो जाए, रिव्यू हो जाए, एंड इट हेल्प्स टू A option. अकाउंटेंट्स आर अकाउंटेबल. यस सर. देखो एक बार पढ़ते चलो. Which of the following is not true of audit working paper? They ensure that the audit team can be held accountable. पढ़ा था कि नहीं? पर्पस में पढ़ा था कि नहीं? Audit team Yes, sir. accountable. Yes sir. ये तो नहीं होगा. Not बोला है. They are saying not true. It is true sir. Then they provide evidence that the financial statements of the client are correct. Do they provide that the financial statements are correct? Do they provide the evidence that the financial statements are correct? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. चलो आगे. They assist in the planning of the audit. Yes sir, they assist. They help in the planning process. Yes sir, this is true. C true है. They facilitate the supervision and review. सर ये भी true है. अरे अभी जस्ट किया था अपन ने. B and D are not the answer. Everyone, A and D is not the answer. Everyone, A and D will not be the answer. अरे यार ये सब कैसे हो गए? एवरीवन, इसका आंसर क्या था? एडवांटेज डी था ना? यस. ईयर एंगेजमेंट लेटर, ईयर 7 years. 7 years. Here see, A is not the answer. Try to eliminate better. Which of the following is not true of the audit working paper? They ensure that the audit team can be held. Sir ये true है. A आंसर नहीं, D नहीं है. अभी B and C में confusion है sir. They provide evidence that the financial statement of the clients are correct. Do they provide evidence that everything is right? No. इसका आंसर B है. Then which of the following is not true in relation to the ownership of the audit documentation? बताओ आप लोग. D option. B. B for ball na? No sir, D for dog. Okay, see everyone now. Which of the following is not true in relation to the ownership of the audit documentation? Ownership किसका होता है सर? ऑडिटर का होता है. Can the client access? No sir, client cannot access sir. और क्या था? Yes, चलो चलो चलो. And whenever it is required, client के permissions अपन थर्ड पार्टी को दे सकते हैं. All documents owned by client are confidential. Yes sir, ये तो true है ना? Whatever ownership the audit documentation, all the documents are owned by the client are confidential. ये तो आंसर नहीं है सर. Then a client has the right to access information held on them in the audit working paper. नहीं, ये तो गलत है. Does the client has the right? नहीं बाबा, client के पास right है ही नहीं that he or she can access the information. They do not have. So B will be the option. C, working papers are the property. Sir ये तो आंसर नहीं. A and C are right. Yes sir. A client may require the auditor to disclose document which belongs to the client to a third party. Yes, the client may require बोला, must नहीं बोला है. The client may require बोला, must नहीं बोला है. When the consent, so the option B is wrong. ये भी true है.
ये भी true है ना, that the client may require that this can be given. Yes sir. So now when you see everyone, resume, so इसका आंसर क्या था, बी. यस सर. सो ऑल आर करेक्ट. समझ में आया रे हर्ष? व्हाट आर द रॉन्ग विद द लास्ट ऑप्शन? नहीं सर, वो थोड़ा सर कंफ्यूजन हो गया था। देखो, ए तो आंसर नहीं होगा इसको, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन. सी इसका आंसर होगा क्या, ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी है सर. बी एंड डी कंफ्यूजन. नाउ मैंने क्या बोला, the audit documentation, the working papers can be given to others also when if the client says give it. तो कहने से the client may require, must नहीं बोला है, the client may require the auditor to disclose document which belongs to client to third party, they can give. but ये क्या बोला, a client has the right to access. client के पास right ही नहीं है कि that he or she can access the information. okay Yes, sir. लिखा था ना, देखो इधर देखो नोट्स में जब आएंगे, auditor may choose to provide the client certain working papers, that is copies, if the auditor feels. Yes, sir. The client can demand. Can the client demand? No, Papa. The client cannot demand. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. So with this, everyone, if you come, so we have started with the basic ISAs, and here and there the direct theory question as I mentioned. So we have done ISA 200, ISA 210. There are good number of questions in ISA 210. ISA 230, one or two questions, three questions. Factors affecting content purpose. ये तीनों क्वेश्चन आते हैं. And then small topic which I mentioned are for your MCQ purpose. Now everyone, when coming to these standards, everyone, these three standards we will be doing along with when we start with the question practice, because ये छोटे छोटे. Yes sir. Now from tomorrow everyone, sir, these two when we do internal control. From tomorrow everyone, we will be starting with the ISA 300 series, which is from the auditor's point of view, and a section C question which comes in the exam. Yes sir. And then when coming to internal control, we will do this one everyone. And last one is reporting. Yes sir. So simultaneously ये भी होगा. Yes, in between we will do your chapter number 2, that is external audit, internal audit, two topics, government grant, corporate governance and ethics. Yes. So from the next, that is from tomorrow, we'll be starting with this everyone, which is the very important topic for your section B. Yes sir. So now coming to this everyone, let me show you a question which was tested everyone. सर कौन सा क्वेश्चन आया था सर आइजा 230 रिलेटेड? और देखो सितंबर दिसंबर 2025 में आया, सॉरी नॉट सितंबर दिसंबर 2020, इन 25 लेटेस्ट पास्ट पेपर में था ये क्वेश्चन. इन दी लेटेस्ट पास्ट पेपर, in the latest past paper only everyone you had this question. Yes sir. That is ISA 230 audit documentation requires auditor to prepare audit documentation for this is one on a timely basis. State three purpose. Will you be able to write three purpose or not? Just लिखा अपन ने. To assist the audit team to plan and perform the audit. Yes sir. Provides evidence that the audit was planned and performed according with ISA and legal laws and regulatory requirement. Then what is the other thing? You can say it helps in the supervision, review and direction of the audit. Yes, तीन purpose हो गए, simple. Yes sir. Here I will paste this one everyone. मैं ये paste कर लूंगा. क्या बोला आपका? Permanent and current. This one everyone. Yes. So let me share this in the group so that you can refer to these notes also. Yes, sir. So with this, everyone, so we have done this. From tomorrow, we'll be starting with the planning part, the risk part,
and the coming 10 days वही चलेगा पूरा, risk का topic चलेगा and past paper ये सब. So with this everyone, bye bye, have a good day, signing off, Radha Radha too. Everyone, let us meet tomorrow. Bye bye everyone.